Anil Kapoor this side. Good. Yeah, I think Vashisht is there to take care of muting, unmuting wala. Yes, Okay, ma'am. okay. Haan. So Vashisht, just let us know when it's on the floor. Definitely, ma'am. Should we start? Vashisht? Just a second, ma'am. Okay, right. Is there any problem, Vashisht? Hello. And we are good to go. We are Right. live now. Right. Namaste, everyone. And I welcome you all who have joined us in the program, all the parents, teachers, children, adolescents, and a lot of parents and other people. And I welcome our chief guest for today, Professor Dr. Ravi Wankhedkar, who's treasurer, World Medical Association. An exemplary leader and extraordinary teacher he is. I welcome guest of honor for today's program, Dr. Aruna Narayan, and she's a retired GM Adolescent Health NHM. I welcome a guest of honor, Dr. Sharad Agarwal, Chairman IMA HBI and past President UPIMA. I welcome President IMA UP, Dr. M.K. Bansal, Dr. Poonam Singh, co-convener National Mission Pink Health, and I welcome all my team joining in from different districts: Aligarh, Banda, Basti, Gonda, Gorakhpur, Hapur, Lucknow, Meerut, Muradabad, West Ghaziabad. Dr. Ruxana ma'am is here with us, and I think Dr. Anil Kapoor is here with us, and a lot of senior authorities and dignitaries. Dr. Rajiv Goyal, Secretary IMA UP State. I welcome you all in this event. So it's a pleasure to meet all of you digitally. I welcome all who have joined as guest speaker in the program. Uh, Team, our MPH team, Dr. Aruna Mittal, Dr. Divya, of course, our chairperson, Dr. Shabana is there, Dr. PL Mishra, Dr. Renu Agarwal, Dr. Deepti, Dr. Pratibha, Dr. Anjana, Dr. Manisha, Dr. Renu Bhagat, Dr. Poonam Singh, Dr. Manju Barik, who will be a guest speaker in tonight's program. I welcome all the daughters who had spared their time from different places
across India and outside India. Miss Minnie is there with us, Miss Devanshi, Dr. Saima, Miss Padmini Mishra, Dr. Meenakshi, Dr. Dhwani, Dr. Diksha, Miss Curie is there with us, Dr. Devisha, Miss Akanksha, Miss Kirti Anand, Miss Anshika Pandey, Miss Soumya Bhagat, Miss Akanksha Singh, and Miss Shinjini. I welcome all the daughters, and it's an honor for us who that these daughters, they have kindly consented to join the program as a guest speaker tonight. So continuing with our program, we'll just start with the IMA prayer. And I would invite our chief guest, Dr. Ravi Wankhedkar, State IMA President, Dr. M.K. Bansal sir, State IMA Secretary, Dr. Rajiv Goyal sir, State IMA Patron and State Leader, Dr. Sharad Agarwal sir, to kindly join in lamp lighting, and all the dignitaries present here to kindly join and inaugurate the program with IMA prayer. My screen is visible? Yes, Dr. Namika, screen is visible. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. मैडम मीटिंग कॉल टू ऑर्डर नहीं करवाया प्रेसिडेंट से इन्होंने. न त्वहं कामये राज्यं, न स्वर्गं न पुनर्भवं, कामये दुःखतप्तानां प्राणिनां आर्तिनाशनम्. I would request Dr. Bansal sir and Dr. Rajiv sir to formally inaugurate the program. So please call the meeting to order. President sir, please. President sir, Dr. M.K. Bansal sir. So you are mute. Unmute करो अपने आप. I am audible. Yes, Yes, sir, you yes. are audible. Respected Chief Guest, Professor Dr. Ravi Wankhedkar sir, World Medical Association Treasurer, President of Medical Association, past National President IMA and Founder, Mission Pink Health, Guest of Honor, Dr. Sharad Agarwal, National Chairman, SBI IMA, past President IMA UP, past Vice President IMA Headquarters, Guest of Honor, Dr. Aruna Narayan, Retired General Manager, Adolescent Health National Health Mission UP, Dr. Rajiv Goyal, Secretary IMA UP, Dr. Poonam Singh, Co-Convener, National MPH, Dr. Rukhsana Khan, Madam, Dr. Divya Chaudhary, Chairperson MPH IMA UP, Dr. Anamika Pandey, Secretary MPH IMA UP, our team, Mission Pink Health IMA UP State, and my dear friends, good afternoon. It is a matter of great pleasure that IMA Mission Pink Health, Uttar Pradesh, is organizing an online program on National Girl Child Day.
my daughter, my pride. I congratulate team of IMA Mission Pink Health UP, especially Dr. Poonam Singh, Dr. Divya Chaudhary, Dr. Ruxana Khan, Dr. Anamika Mane for their hard and untiring job to arrange such an excellent webinar on National Girl Child. Educate and empower. I am sure all of us will be immensely benefited from today's program. Thank you. Long live IMA. Thank you, sir, for your kind words. So the objectives of National Girl Child Day are mainly to create awareness about rights of a girl, to give girls the opportunity like everyone else, to remove any kind of gender bias, promote awareness about inequalities that child girl faces, to educate people about girls' education, to respect them, to decrease discrimination, to change the society's attitude towards girls, and to decrease female feticide and create awareness about the decreasing sex ratio. So these are the main objectives why we are celebrating Girl Child Day. So it's a national 24th January is National Girls Child Day, but at Mission Pink Health we celebrated National Girl Child Week to mark that occasion, and it was from 19th to 25th of January. And what can be a more beautiful way to end or culminate this program in such a grand manner? And it's like today we are also celebrating eve of Republic Day or Gantantra Divas. आजादी का अमृत महोत्सव भी चल रहा है, and while we remember the brave soldiers who fought for our country, तो आज हम उसके साथ साथ देश की बेटी को भी सलाम करते हैं, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार करते हैं. और our program today it revolves around the theme educate and empower, and my daughter, my pride. So it's also a day to celebrate the accomplishments of our daughters in different fields. Every girl has a unique story, unique accomplishments. हर बेटी खास है, और ये इन जैसी बेटियों से ही देश में उत्सव है और सेलिब्रेशंस है, जिन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन किया. और हमारे साथ ऐसी बहुत सी बेटियां आज मौजूद हैं जो हमारे इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं. आज हम ऐसी ही कुछ बेटियों से मिलकर और उनसे उनकी एक्सपीरियंसेस और कुछ बातें साझा करते हुए इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और उनके मन की बात सुनते हैं. और उनकी ये बहुत अच्छी बात है, एंड वी आर ऑनर्ड दैट our team Mission Pink Health has volunteered for this initiative to include daughters also in the program. And secondly, it's a day to re-evaluate all our efforts which we have been putting towards empowerment of girl child in different fields. तो आज एक मूल्यांकन करने का भी समय है. There are lot of initiatives government has taken for girl child education, health of girl, and as a responsible citizen of the nation, हमें ये ensure करना है कि वो accountability towards those initiatives हमारी क्या हो सकती है, how the people of the nation can contribute giving the due dignity of the girl child and actually empowering the girl child. Health and nutrition की भी इसमें अच्छी खासी भूमिका है. So it's about changing people's mindsets, and I think our program is going to just contribute in that also, spreading awareness and changing the mindsets. So proceeding further, I would like to introduce our chief guests for tonight, chief guest and guest of honor. Just I'll share the screen. Is the screen visible, Dr. Divya?
Yes, Dr. Namika, screen is visible. So our chief guest for today, Dr. Ravindra Sitaram Wankhedkar sir. बहुत बहुत नमस्कार sir आपको, and we are so grateful that you accepted our invitation. Thank you so much, sir. So it's it's an Herculean task to describe the accomplishments sir has achieved, but still we'll try with few words. He's exemplary leader, extraordinary teacher, good human being. Currently, he is treasurer, World Medical Association 2021-23, and he is president SARC Medical Association. He was president SARC Medical Association 2018 to 20, national president Indian Medical Association 2018. He is honorary professor of surgery SBH Government Medical College Dhule, coordinator for World Medical Association, international chair of bioethics, and he's national secretary IMA. He was national secretary IMA HBI 2015 to 17, national chairman IMA AMS 2013 to 14, and he's president Dhule District Basketball Association also. He completed his UG and postgraduate from DG Medical College, Pune, and he works in GMC Dhule. He was awarded Teacher of the Decade Award in 1999. In Maharashtra IMA, National IMA, he served under various prestigious capacities. He's the founder coordinator of National Mission Pink Health, wherein more than 5 lakhs of adolescent tribal girls were benefited till date, giving importance to women doctors as well. So this is, again, I would say, thank you so much, sir, for accepting the invite, and it's an honor for us to host you as a chief guest. He was sworn as 89th National IMA president, and our country saw lot of changes during that time. Bharat Yatra as a national leader connecting the fraternity across India. Never in IMA history was this taken into consideration, like involving IMA in government decisions, whether it is violence against doctors, Ayushman Bharat, NMC bill, or CA. So a lot of things are to his credit. And at international level, he held many prestigious posts, and successfully he participated in lot of international forums in United Nations, UNA, USA, UK, Japan, China, Spain, Portugal, Nepal, Pakistan, Bhutan, Maldives, and he organized lot of international conferences in India too. And he runs a state-of-art Sitaram Hospital for poor population also. So, and he developed a lush green orchard with lake aptly named as Ravi Srishti. So, and he has been hosting lot of events there. And he is equally involved in social, educational, literary, and sports activities as well. His virtue of remembering names, this is something very unique of all the IMA leaders throughout the nation. It makes him so unique. And I welcome Dr. Meena Madam also. She's also there in the program. Welcome you, Madam. Thank you so much for being here. And Madam has been past president of IMA Dhule, past national secretary IMA CGP, and currently she's advisor to World Medical Association Committee of Medical Ethics. एंड ये तो मेंशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, आज भारत की बेटियों को हम सलाम कर रहे हैं, तो सर की भी बेटी हर्षिता हैं, जिन्होंने बीटेक MBA MS फ्रॉम US कंप्लीट किया, एंड प्रेजेंटली ही इज वर्किंग इन न्यूयॉर्क. And he always says blessings of his mother hold the utmost importance in his life. And that is a very, very important thing, acknowledging the importance of mothers. And we salute you, sir, and welcome you in our program. And I hope with these words, I'm able to just touch few things
which are to your credit. Many thank you, sir, and most welcome in the program. Then I request so many thanks to Dr. Sharad Agarwal for accepting being guest of honor in the program. He's honorable state leader and patron IMA UP state. He's chairperson IMA HBI. He was past president UP IMA, past vice president IMA headquarters. So welcome, sir, and thank you for accepting the invite. Dr. Divya, you can continue with your further program. हाँ. Yeah. डॉक्टर नामिका, मैडम अरुणा की सीवी प्लीज हाँ. शेयर करिए. हाँ, बहुत ही मॉडेस्टी के साथ और बहुत ही प्राइड के साथ आई वेलकम आवर गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अरुणा नारायण. Madam worked as General Manager, National Health Mission from 2008 to 2015, and she implemented programs of child health and adolescent health for the whole state. She worked as a Senior Advisor NHM UP from 2015 to 2020, from 2015 to 2020. Madam did her MBBS and MD in Pediatrics from GSVM Kanpur Medical College in 1981. After that, she joined Provincial Medical Services and served in various hospitals as pediatrician for 16 years. She worked as state coordinator for Baby Friendly Hospital Initiative, UNICEF, for good 10 years. In 1993, she was sent to Liverpool, UK by the state government for diploma in maternal and child health. In 2008, she did a certificate course from UCL Children's Hospital, London on human lactation management. She worked as a state program officer for reproductive and child health in Directorate of Family Welfare. She has worked actively for Pulse Polio campaign of the state throughout and as a joint director and state program officer for NHM from 2005 to 2008 in Directorate of Family Health Welfare. So, Madam, आपका बहुत स्वागत है, and we are so honored to have you here with us. और मैडम के साथ साथ हमारे बहुत सारे और डिग्नेटरीज हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है. मैं डॉक्टर अनिल कपूर का भी स्वागत करना चाहूंगी. वो पहले मेरठ के पास्ट प्रेसिडेंट रहे हैं और वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के रहे हैं. डॉक्टर आनंद प्रकाश, वो इस समय हापुड़ में हैं और हापुड़ के ऑफिस बेयरर हैं और साथ में वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के रहे हैं. आई वेलकम यू बोथ ऑल्सो. थैंक यू डॉक्टर दिव्या. I would like to call upon the dais, Dr. Neha. Thank you, Anamika ma'am. So firstly, I would like to welcome Dr. M.K. Bansal sir, who is the President IMA UP chapter. So thank you so much sir for taking out the time and guiding us. Then I would also like to welcome Dr. Rajiv Goyal sir, Secretary IMA UP chapter. Welcome to you, sir. Sir, would you like to say a few words, Rajiv, sir? Rajiv Goyal, sir. Is he there, Dr. Neha? Yes, ma'am, he was there. डॉक्टर नेहा, डॉक्टर राजीव ने ऑलरेडी सबको एड्रेस किया है. जी मैम. हमारे साथ डॉक्टर शरद भी हैं. हाँ, डॉक्टर शरद सर. हाँ, डॉक्टर शरद हमारे स्टेट. डॉक्टर शरद अग्रवाल, patron and state leader UPIMA. Sir, please would you like to say a few words? Hello. Dr. Sharad Agrawal sir, please unmute yourself. Hello. Welcome, sir. Yes. So, you want to continue with what you want to say, or should I? No, sir. You speak? should. We'll start with your words of wisdom. If you say a few words. So, thank you very much for inviting me, though on a short notice. But it's good that, as Dr. Anamika says, that they are ending this entire week with the bang. And it is good that the UP MPH is coming out with flying colors. So first of all, respected
President Dr. M.K. Bansal sir, our chief guest, past national president, present Treasurer WMA, our leader Dr. Ravi Wankhedkar sir, Dr. Rajiv Goel sir, Secretary IMA UP State, Dr. Anand Prakash, Vice President IMA UP, and other senior colleague Dr. Anil Kapoor, and all the leader, Dr. Ruxana Madam, Dr. Poonam Singh, Dr. Divya Chaudhary, Chairperson for Mission Pink UP State, and Anamika, Secretary of Mission Pink UP State. So I congratulate all of you that you have organized wonderful thing, wonderful webinar, and good attendance is there. And see, everybody, at least we know we are, IMA is running this campaign for decades. Beti Bachao, Beti Padhao. Though the names are different, but the concept is always the same, that you support the girl child, support the girls, support the education for the girls. So in 2010, I think IMA launched this Beti Bachao, Beti Padhao project along with the Aao Gaon Chale. But it is the Dr. Ravi Wankhedkar who formally put the spirit, actual में जिसमें जान फूकना होता है शरीर में, वो Dr. Ravi Wankhedkar is the person who did that, and actually he activated the Mission Pink, and in this 3-4 years, this is how where is the Mission Pink is, and Mission Pink is doing wonderful job, and I congratulate the UP team especially for their good work and continuous good work. So my one request is, yes, the Beti is very important and we should support, and we are supporting, and I think everybody is supporting, and Beti is very close to the heart. It should not be a day, it should be the continuous process. So we should not be only focusing on celebrating day or week. Beti is very important for the society, for the development of the country, for everything. So we should keep doing this, and probably I would request if all the doctors, they should use a logo on their prescription, Beti Bachao, Beti Padhao. That will be a continuous process, because I don't think there is any problem with this supporting the daughter in the elite group, or especially the doctors. The problem is in the illiterate group, in the 70% population residing in the rural area. So we need to work hard on those rural area to educate those people the importance of the daughter and how to support them and avoid this prenatal abortion. So that is very important. So I think Mission Pink along with IMA UP State should do work in the villages or in the schools to support the daughter continuously. And if everybody, at least the executive of Mission Pink and the IMA UP State, they should start putting Beti Bachao, Beti Padhao on their letterhead, on their prescription pad, so that this should not be only a celebration, celebrating a day or a week. It should be a continuous process, and that is how we should support the daughter. I am again thankful to IMA Mission Pink to invite me on this prestigious webinar, and I am looking forward for the success of this. Thank you very much. Long live IMA. Thank you, sir. Thank you for your kind words. It's indeed very true. Like, it should not be a day. ये तो हमेशा चलना चाहिए, और ऐसी awareness और orientation हर समय हमें उसके लिए प्रयासरत रहना चाहिए. और बहुत अच्छा suggestion है सर आपका. We'll definitely follow that. Writing on prescription, Beti Bachao, Beti Padhao. Thank you so much, sir. Now, although we are running short of time, but I would like to invite Dr. Poonam Singh is there with us, National Co-Convener, Mission Pink Health, and Dr. Ruxana is there, Vice Chairperson, WDW Lucknow. Ma'am, if you would add few words. सबसे पहले तो हमारे मिशन पिंक के और वुमेन डॉक्टर्स विंग के आए हुए मेहमान खुसूसी रवि वानखेड़कर सर और वीना मैडम को
बहुत इस्तकबाल करती हूँ कि वे हमारे यूपी स्टेट के इसमें एज ए गेस्ट बन के आए। और मेरी दुआएं हैं इन लड़कियों के लिए कि जो हमने एक मिशन एजेंडा जो सर ने हम लोग को जिम्मेदारी दी है, वानखेड़कर सर ने, ये लड़कियां इसको बहुत अच्छे से कर सकेंगी। क्योंकि मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ हमारे प्रेसिडेंट बंसल सर, राजीव गोयल, शरद अग्रवाल। नो डाउट हर मुश्किल में, हर चीज में हमें जो मुश्किलें होती हैं, शरद इज ऑलवेज देयर टू हेल्प अस ऑल। सो विथ ऑल माय बेस्ट विशेस टू ऑल। और जैसा उन्होंने एडवाइस किया है, हम आगे भी लड़कियों के लिए और बहुत से काम एज एडवाइज बाय डॉक्टर शरद अग्रवाल वी विल डेफिनेटली सी टू इट। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू अनामिका एंड दिव्या फॉर देयर ब्रेन चाइल्ड के हमको ये एक ऐसा प्रोग्राम करना चाहिए। एंड ऑल माय यूपी मिशन पिंक executives who have put their maximum of efforts to make this a successful program. So good luck and best wishes from my side. Long live IM. Thank you, ma'am. Dr. Thank you, Poonam ma'am. Singh, we would like to hear few words from you as well. Hello, ma'am. Good Yeah. evening to everyone. Good evening, Ravi Wankhedkar sir, Bansal sir, Rajiv Goyal sir, and Dr. Sharad Agrawal. And first of all, I want to congratulate Team MPH UP for this wonderful program. एंड मैं सबसे ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहूँगी डॉक्टर रवि वानखेड़कर सर को, जिनका कि ये मैं तो यही कहूँगी कि उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि इससे पहले मैंने तो नहीं सुना था मिशन पिंक के बारे में कभी भी, मे बी आई एम सो इग्नोरेंट। लेकिन रवि वानखेड़कर सर जब प्रेसिडेंट थे तो शुरू से ही उन्होंने बहुत अपना प्रेसिडेंटशिप शुरू होते ही सर ने जिस एक्टिविटी को स्टार्ट किया, सर ने साइकिल यात्रा की और MPH और ये वुमेन एम्पावरमेंट सर ने ही स्टार्ट किया, और तभी से हम लोग एकदम एक्टिव हो गए। एंड फॉर 2 years आई वाज चेयरपर्सन MPH यूपी स्टेट, और उसके बाद से अब तक भी जो प्रोग्राम है, जो करंट टीम है, वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है। एंड हम लोग आज बात करना चाह रहे हैं नारी सशक्तिकरण के ऊपर, जिसके लिए मैं कहना चाहूंगी 2-3 चीजें कि क्योंकि सारी बेटियां भी सुन रही हैं, तो नारी सशक्तिकरण के साथ हमें वुमेन एम्पावरमेंट में हमें जो मेन चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो है कि लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए पॉलिटिक्स में और इकोनॉमिक डिसीजंस में। अगर ये 2 इकोनॉमिक डिसीजन में कब वो पार्ट कर सकेंगी, जब वो अच्छी तरह से एजुकेटेड होंगी, हाईली एजुकेटेड होंगी और इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होंगी, तभी वो सोसाइटी में, फैमिली में और कंट्री में उनकी बात सुनी जाएगी, जब वो इकोनॉमिकली सशक्त होंगी और अच्छी पोस्ट पर होंगी। और दूसरा है पॉलिटिक्स में इन्वॉल्वमेंट। अब सारी पार्टियां भी पॉलिटिक्स में, कुछ पार्टियों ने 40% रिजर्व किया है कि ताकि लेडीज जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें डिसीजन मेकिंग में। जब तक डिसीजन मेकिंग में हम लोगों का पार्टिसिपेशन और आगे आने वाली जनरेशन जो हमारी बेटियां हैं उनका पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक हम जेंडर इक्वेलिटी की बात नहीं कर सकते। इवन डेवलप्ड कंट्रीज भी जो हैं वर्ल्ड में, उन्होंने भी अब तक जेंडर इक्वालिटी अटेन नहीं किया है। नॉर्वे और फिनलैंड में ये गैप कम हुआ है, लेकिन ये सबसे ज्यादा गैप हमारी कंट्री में और साउथ ईस्ट एशिया में है। और ये जेंडर इनइक्वालिटी खत्म करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी बेटियों को अच्छे से पढ़ाएं, जो कि हम कर रहे हैं, लेकिन जो थोड़े लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप हैं उनमें उनको एक्टिवेट करना है, उनको अवेयर करना है कि अगर आपको अपना अधिकार चाहिए तो आपको सशक्त होना पड़ेगा, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, दोनों ही। मेरा ऐसा मानना है। Thank you, Dr. Poonam. Yeah. Thank I you. would now like to invite our chairperson, Dr. Divya Chaudhary, to say a few words, and with that we'll proceed further. Am I audible? Yeah, Yeah. ma'am, you are audible. Again, a very good evening to all of you. मैं इस समय डॉक्टर दिव्या चौधरी एज चेयरपर्सन MPH यूपी थोड़ी सी कुछ बातें कहना चाहूंगी। हमारे साथ बहुत सारे और डेलीगेट्स भी एसोसिएटेड हैं, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल स्कूल के, सब लोग एसोसिएटेड हैं। तो मैं उन सबको बताना चाहूंगी कि मिशन पिंक हेल्थ एक्चुअली इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की एक ब्रांच या एक विंग है। ये IMA का एक बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, और ये बेसिकली डॉक्टर रवि वानखेड़कर ने शुरू किया था इस उद्देश्य के साथ कि एडोलेसेंट हेल्थ इंडिया में किसी भी तरीके से सफर ना हो, बेसिकली फॉर अनीमिया प्रिवेंशन।
तो जो और उसके साथ साथ और बहुत सारी चीजें थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एडोलेसेंस की पूरी हेल्थ, फिजिकल मेंटल सोशल, हर तरह की हेल्थ को केयर करना, उनकी रिक्वायरमेंट्स को केटर करना एमपीएच का काम है। इसके साथ आओ गांव चलें, आओ स्कूल चलें, ये मुहिम भी एमपीएच के अंतर्गत है। यूपी की जितनी भी ब्रांचेस हैं आईएमए की, उनमें ज्यादातर में मिशन पिंक हेल्थ की एक विंग भी है, और हमारी कुछ टीम्स हैं जिनके मैं नाम लेना चाहूंगी। अलीगढ़, बांदा, बस्ती, गोंडा, गोरखपुर, हाथरस, कानपुर, कुशीनगर, लखीमपुर, लखनऊ, सहारनपुर, सीतापुर, वेस्ट गाजियाबाद, ये सारी टीम्स बहुत अच्छे से, बहुत रेगुलरली, बहुत कंसिस्टेंटली काम कर रही हैं। हम लोगों ने जो अनीमिया प्रिवेंशन का कार्यक्रम 3-4 महीने किया, उसमें अनीमिया डिटेक्शन, प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट सब कुछ किया, स्कूल्स के बच्चों को इन्वॉल्व किया, और उसके रिजल्ट्स भी थोड़े से शॉकिंग थे कि 90% से ऊपर बच्चों में अनीमिया मिला। उसके साथ हमने बहुत सारी फार्मा कंपनीज को भी मोबिलाइज किया, जो उनकी सीएसआर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके तहत कंपनीज ने हमें बहुत हेल्प किया। आयरन टैबलेट्स भी दी बच्चों के ट्रीटमेंट के लिए, एल्बेंडाजोल और ये सब एंटी वर्मिंग भी दी। इसके साथ ही हम जो है एडोलेसेंट हेल्थ के बाकी इश्यूज जैसे मेंटल हेल्थ पे हमने कई सारे वेबिनार्स किए, और स्पेशली उसमें साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के साथ और डॉक्टर्स के साथ बच्चों का डायरेक्ट डायलॉग कराया। बच्चों ने अपने हिसाब से अपने क्वेश्चंस पूछे और उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब मिले। तो एमपीएच यूपी इज डूइंग लॉट ऑफ वंडरफुल वर्क्स। अब इसके बाद हम एडोलेसेंट्स की कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, उनके बारे में आगे और प्रोग्राम्स आगे बढ़ाएंगे, और आओ गांव चलें, आओ स्कूल चलें, इस मुहिम को और आगे बढ़ाएंगे। आज गर्ल चाइल्ड डे को जो हम मना रहे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बहुत विश्वास के साथ ये बात कह सकती हूँ कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन पूरे सोशियो इकोनॉमिक सिस्टम को बहुत बेहतर बना सकती है। हमारा संविधान लड़के और लड़कियों दोनों को बराबर अधिकार देता है। सबसे पहले तो प्राइमरी एजुकेशन, जैसा कि डॉक्टर शरद ने भी कहा कि स्कूल में प्रॉब्लम, वो गांव में प्रॉब्लम है, इलिटरेट जो पॉपुलेशन है हमारी गांव की, वहां पे प्रॉब्लम है, उन्हें नहीं समझ आता कि लड़कियों का पढ़ना कितना जरूरी है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइमरी एजुकेशन, जो कि एक्चुअली विकास के लिए बहुत जरूरी है। जब लड़कियां प्रोटेक्टेड होंगी, एजुकेटेड होंगी, उन्हें अपने अधिकारों का पता होगा, तो उसके आधार पे वो सोसाइटी को अवश्य ही एक ऊंचे और अच्छे लेवल पे ले जा सकेंगी। और एक छोटा सा एग्जाम्पल तो टोक्यो ओलंपिक्स का है। आप देखिए, पीवी सिंधु हो या वो साइकॉम मीरा चानूबाई, इन सब लोगों ने कितने अच्छे अच्छे हमें मेडल्स दिलवाए। तो नारी सशक्तिकरण तो देश में हो रहा है, लेकिन कुछ जो गांव में लोग हैं उनके लिए भी हमें आगे बढ़ना होगा। और एक बहुत छोटी सी जो मैं दिल की बात कहना चाहती हूँ, जब हम कभी सड़क पे निकलते हैं और हम देखते हैं लड़कियां साड़ी पहने होंगी, सिर ढका होगा और स्कूटर चला रही होंगी, और कई बार हेलमेट भी लगाया होगा, मतलब वो चीज मेरे दिल को इतनी अच्छी लगती है कि यस, द गर्ल्स आर कमिंग फॉरवर्ड। तो डिस्पाइट ये सब होने के बाद भी, इस डिस्क्रिमिनेशन के बावजूद भी, लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और बहुत अच्छा कर रही हैं, और इसे हमें अभी और आगे लेके जाना है ना। मैं चाहती हूँ कि हम सब लड़कियों को लाइक विंग्स दे सकें, कोई जादू की छड़ी हो, उन्हें विंग्स दे सकें और वो खुले आसमान में बिल्कुल बहुत अच्छे से उड़ सकें। ये मेरा अपना सपना है और हम इसे आगे पूरा करना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर दिव्या, बहुत अच्छा आपने कहा, और बहुत सी बेटियों के नाम लिए जिन्होंने राष्ट्रीय स्तर पे बहुत कीर्तिमान स्थापित किए हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि आज हमारे साथ भी कुछ बेटियां हैं जिनके बहुत बहुत अकम्प्लिशमेंट्स हैं, कुछ जुड़ी हैं स्क्रीन के उस पार, और कुछ हमारे इस पार हैं जो गेस्ट स्पीकर की तरह हमारे साथ हैं। और उन्हीं के ऊपर एक छोटी सी मूवी मिशन पिंक हेल्थ यूपी ने बनाने की कोशिश की है। एंड दिस मूवी, इट गिव्स अस अ फूड फॉर थॉट। इट्स नॉट जस्ट अ मूवी, it's giving some food for thought, like everyone said. And in light of current statistics, or what is the current status of education in our country, what can we do, what pledges we should make, what किस तरह के हमको प्रण करने हैं उसको लेकर, और आगे कैसे बढ़ना है इसको लेकर, ताकि ये एक ही प्रोग्राम के साथ खत्म ना हो जाए और कंटिन्यू करता रहे। तो आइए देखते हैं एक छोटी सी मूवी, education and health is empowerment. So I'll just share the screen. Dr. Divya, let me know if it's visible or not.
मेरा स्क्रीन दिख रहा है? हाँ हाँ, स्क्रीन विजिबल है. Okay. And this movie, it's dedicated to all the girls who are here, all the daughters who are here as guest speakers, and all the girls who have joined us as participant in the program. Movie is not visible. Yeah, just a second, I'll start. Okay. आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, very nicely.
It was awesome, awesome video. Very nice. Thank you all for watching. Hmm. एंड जैसा कि मैंने कहा कि सभी डॉटर्स को डेडिकेटेड है, लेकिन मदर्स का भी उतना ही योगदान है, बिकॉज ऐसा नहीं है, एकदम। एवरीबडी हैज हर और हिज ओन काइंड ऑफ चैलेंजेस. माँ होने के अलग दायित्व और चैलेंजेस हैं, और डॉटर को आगे लेकर कैसे बढ़ाना है, या लीडिंग बाय एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं, वो कैसे लेके हमें चलना है, उसके अलग चैलेंजेस हैं. तो मात्र सभी बहुत काम है. And I would like to now invite our chief guest of tonight, Dr. Ravi Wankhedkar sir. Sir, please say a few words of wisdom and enlighten all present here. हाँ, डॉक्टर अनामिका, मैं डॉक्टर रवि सर के बारे में एक दो बात और बताना चाहूंगी. ऐड कर जी. सबसे पहले मैंने डॉक्टर रवि सर को 2017 में देखा था. दैट वाज मुरादाबाद में एक कोई यूपी की कॉन्फ्रेंस चल रही थी. उस समय हम लोग के फैमिली फ्रेंड हैं डॉक्टर राजेश सिंह, डॉक्टर पूनम के हस्बैंड है ना उस समय, और मेरे हस्बैंड भी यूपी में, डॉक्टर जयंत शर्मा यूपी में ऑफिस बेरर थे. तो उस समय डॉक्टर राजीव सर चीफ गेस्ट की तरह आए थे, और he was like, it was so nice to see him, young bubbling person, and वो इतने like he very polite, very smiling, very courteous. सब लोगों के साथ उनका ऐसा व्यवहार था, बिल्कुल ये लग रहा था कि जैसे वो सबको बहुत दिनों से जानते हैं. वेरी अंडरस्टैंडिंग एटीट्यूड. और सर का जो एड्रेस था उस समय, लाइक आई वाज एक्चुअली ओवरपावर्ड बाय द एन्चेंटमेंट ऑफ हिज एड्रेस. इट वाज सो वंडरफुल. और सर इज अ फ्रेंड ऑफ फ्रेंड्स एंड अ टीचर ऑफ टीचर्स. और बड़ी बड़ी बातें तो सबको बहुत याद रहती है. एक छोटी सी बात सर की, हमें जीमा में एक आर्टिकल लिखना था डॉक्टर जयंत को, तो डॉक्टर जयंत ने डॉक्टर रवि से हेल्प मांगी, और सर ने तुरंत यस यस आई विल हेल्प यू, सर ने तुरंत हेल्प किया. तो दैट वाज सच अ नाइस गेस्चर. तो मैं तो सर को हमेशा से, और उसके बाद सर का जो एमपीएच के लिए पैशन था, जो आईएमए के अपलिफ्टमेंट के लिए पैशन था, दैट इज जस्ट इन्फेक्शियस. प्रोबेबली दैट इज व्हाई वी आर देयर इन एमपीएच एंड इन आईएमए. वेलकम सर. सर प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स. Thank you for the kind words. I don't know whether I deserve that praise or not. But anyway, still anybody feels very happy when somebody praises them. The very affable president of IMA Uttar Pradesh, who keeps me always informed and very active on social media, my good friend, Dr. Bansal, the very hardworking secretary of IMA Uttar Pradesh, Dr. Rajiv, my brother, whom not only I share my birthday, but a great national leader, and my very, very good friend, Dr. Sharad Bhai, namaste. The guest of honor today, Dr. Aruna Narayan, very learned and experienced. Madam, thank you very much on behalf of Indian Medical Association for being today here and sparing your valuable time to address our very dynamic ladies, the national co-convener and the very dynamic Dr. Poonam Singh, the chairperson of IMA MPH UP, Divya Babiji, namaste. Thank you for the kind words. The secretary, Dr. Anamika, Anand Prakash ji, my very good friend, Dr. Anil Kapoor, and especially I am so happy to see Dr. Ruxana madam, and I am really, whenever I meet her, whenever I see her, I feel that how can such energy, enthusiasm, and such a gentle lady I have never come across in my entire life. Madam, namaste, आदाब. आदाब, शुक्रिया, जरा नवाजी का शुक्रिया. आप लोग खुश हैं? वीना मैडम, आप कैसी हैं? बहुत अच्छा लगता है सर आपको देख के. आपके आशीर्वाद बने रहे. Keep us blessed, madam. All the wonderful mothers who have joined here, and more beautiful daughters who have done exemplary. I was going through the list of their achievements, current achievements of the daughters, and it makes us so proud.
First of all, let me congratulate the IMA, UP IMA team for their achievement on the Clinical Establishment Act, where they could manage to get a very IMA doctor-friendly Clinical Establishment Act, especially the exclusion of less than 50-bedded nursing homes. I think that is an excellent achievement. Team IMA, you deserve all the kudos. I would also like to congratulate the team MPH of IMA Uttar Pradesh. You have conducted an entire week and such wonderful activities going across in a state like Uttar Pradesh. It is very, very heartwarming to see. And I really very happy when Dr. Anamika just texted me that, sir, will you join for MPH? Without any, hesitation, I just said yes. Because we have planted this baby of MPH as a small sapling in our tribal district of Dhule. Let me just tell you that around 6, 7, no, maybe it was 10, 12 years back. First, we started in 2008, where we thought that the Beti Bachao, Beti Padhao program, which was initiated by our past national president from Maharashtra only, Dr. Ashok Adhao. Much before the government could take it up, it was Indian Medical Association who started this program. And we thought that now the next logical step is to see to it that once these young girls and the female infanticide is prevented, once they reach the stage of adolescence, they have a different set of problems. In 2008, first program we did was to felicitate our own doctor couples who had, after 1 or 2 daughters, they have undergone either tubectomy or vasectomy. And there were 28 such couples, I still remember. And that program gave a message to the society that doctors don't run after sons. And thereafter, we involved all other NGOs, all other various religious and caste-based organizations to conduct the programs and to felicitate the couples who have only 1 or 2 daughters. And they have not went after sons. And from there, we being in a tribal district, we in first 3-4 years, we covered all the tribal areas and tribal schools. And along with, of course, anemia detection, even distributing simple things like nail cutters, sanitary pads, protein powders, soaps, it helped a lot. Then we realized that not only the rural areas, the urban girls also have the same problems. And it was really shocking, as someone mentioned, that in the most elite schools in the urban areas, the percentage of anemia was same as that of rural or the tribal areas. And their problems, their question answers, because this is not only anemia detection, your adolescent health. And after the program, when the lectures were taken by our gynecologists or lady doctors, the amount and the nature of questions which came was really surprising. Most educated family, girls coming from most educated families, having basic questions and basic difficulties. Then how to address now the issue of addiction to social media in girls. That is another big issue which needs to be taken up. So from there we started, and I am so happy today that all the states, all the branches, most of the major branches are conducting programs and this Mission Pink Health. That is why we labeled it as mission. It has to be done in a mission mode. And as rightly said, that it is a combination of Aao Gaon Chale, women's health, school health, psychological health, everything clubbed together. This has become now a flagship program of Indian Medical Association. This is a connect between the society. We doctors have very long stayed in our own ivory towers.
And now the time has come to reach out to the society. The good things which we are doing has to be reached out, has to be informed to the society, so that the image of medical fraternity which has taken a battering, or the declining faith in doctors, the falling faith in the doctor-patient relationship, if we have to counter this, no point in only crying horse. We have to take some positive action. And this Mission Pink Health is one of the best examples what good image it gives to Indian Medical Association. The enthusiasm of the school teachers, the village head, and the social workers there is wonderful. I am very sure you all must have experienced it. And that gives Indian Medical Association a very good name. We are not only an association fighting for the rights of doctors. That we are doing and we will continue doing it. But our first and foremost duty is towards the community, towards our patients. Hence the importance of all the community health projects of Indian Medical Association, in which Mission Pink Health is playing a very important role. My another very passion was to bring more and more women doctors into IMF. Try to understand there is a total feminization of medical profession. More than 50% of the doctors today of India are women doctors. And if Indian Medical Association has to be strong, we have to have more and more, not only participation, involvement of women doctors, but we have to see to it that they are properly authorized also, and along not only given ceremonial post of WDW, MPH, but executive post also. I am very blunt on this, and I speak out on all the occasions that if you see the various state branches, how many state branches have women IMA presidents? Unfortunately, a so-called progressive state of Maharashtra, 98 years we never had a woman president as a state president. Nationally, if you will see, only one in the 70s, Dr. Lalita Rao, who was the then health minister of Maharashtra, was made the national IMA president. After that, there has been none woman doctor as a national president. This thing has to change. The mindset of we male leaders of Indian Medical Association are to blame. Our mindset has to change. Similarly, in Mission Pink Health, when working for adolescent health, we are up till now targeting girls only. But the time has come now to target adolescent boys also. It is very, very important that the mindset of boys change, their attitude to see a woman or a girl. Their perspective has to change. For that, they need to be counseled. Hence, it is my earnest request to all the MPH office bearers that to take MPH to the next level, we need to now counsel the adolescent boys also. Because that is extremely important, so that in the long run, they will not discriminate women. This MPH work is a generational work. If in the adolescent stage, the girl's anemia, simple thing like anemia is corrected, she will obviously become a healthy mother, and a healthy mother will deliver healthy children. That is why I always call MPH as a generational work. Whatever you are doing today, 2 generations are going to benefit. And that is going to tackle a lot of our health issues. So never underestimate that giving that simple FS tablet for 90 days, what it is going to do. It seems very unglamorous. We always like to have big cancer detection, CA breast detection camps, but distribution of FS, a very simple thing. And Dr. Aruna will concur with me, FS should be distributed so much that it should be found in the waste paper basket. Yes, that much FS need to be distributed. You are absolutely right, and I think कि folic acid को भी देने की बात हम लोगों को करनी चाहिए, and that too, in fact, before the natal period, before conceivement.
You should start giving folic acid to all the adolescent girls, because Yes. neural tube defects को अगर हमको बचाना है तो हमको हर बच्ची को adolescent age से folic acid जरूर देनी है. Yes, बहुत जरूरी है. FS and folic acid, along with if there is usually there is a protein energy malnutrition also in many areas. Yes. And it is a paradox that on one end of the spectrum is the tribal and the most difficult terrain where lack of availability is a problem, and the most urban and the rich areas where in spite of everything being available, the food, fast food or the dieting fad leads to anemia. Actually, Or the parents don't have enough time for counseling them. एक्चुअली हमें लगता है वानखेड़े साहब कि हम लोग क्या लोगों को ये एग्जैक्टली पता नहीं कि डाइट में क्या देना है, क्योंकि अगर हम लोग को ये सही काउंसलिंग हम कर सकते हो कि चीप डाइट होगी बट इट विल बी फुल ऑफ नरिशमेंट्स, इट विल फुल ऑफ न्यूट्रिशन. Yes, हरी साग सब्जियां दें, गुड़ दें, मूंगफली की पट्टी दें, लोहे की कढ़ाई में पकाएं, आयरन वेसल्स में पकाएं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. छोटे छोटे मैसेजेस अगर हमारे जा पाए तो बहुत कॉस्ट इफेक्टिव, वेरी बेनिफिशियल, and it will be very good and very supportive for the improvement of health of the adolescent girls. Very true, Aruna madam. Simple interventions. That was my main moot point, that distribution of FS or folic acid seems to be very unglamorous, very simple thing. Kya kiya? But that definitely helps. That does. Rather, that only helps. Yes, that does. And another thing that when I say that I don't find that much of women leaders into Indian Medical Association, but I am not cynical. What I have observed for last 3-4 years, that at least at the local branch level, lot of women leaders now are coming. We understand they have their domestic issues, they can't travel, but still many of them are now coming at state level. Few of them are coming out at the national level also. And I am very sure that this encouragement to the women leaders should again come from us male IMA leaders. The problem is here, not with the women leaders. We have a problem. And I am telling you, I am known to talk my heart out. It is very, very difficult to convince my male colleagues. But things are changing. I am very, very optimistic. We started this experiment, IMA Dhule. We had in 2005 all-woman doctors team. Yes. Then in 2015, again we repeated that experiment. Okay. And then that experiment was repeated all over Maharashtra. Major branches like Mumbai, Nagpur also had all-woman teams. Now we are seeing that there is a woman state president of IMA Odisha. There is a woman state secretary of IMA Assam. There is a president-elect woman of IMA Haryana. So things are changing. Yes. I am not cynical. I am always hopeful. And that is why I am here today, to see to it that you people get encouragement. You should see to it now, as Sharad has also said, not only celebrate one day. It does not take anything. You don't need any sponsorship to buy FS tablets. I'm telling you. It should be thrown here. Yes. You just have to go to some school. Ready-made CDs are there on adolescent health prepared by MPH. You just play them, distribute those CDs to all schools. All schools are now digitally enabled schools. The teacher has to play them. All question answers are there. That is very, very important. Again, I will say our experience, if you see the questions, you will laugh at it, how that a most rich, affluent person's daughter should ask such questions. We visited deaf and dumb schools. We conducted programs in lot of madrasas also. And we got very good experience. Ultimately, the child's health is mother's health, is the next generation child's health. Yes. So as Sharad said, let us have a massive awakening program, not only limited to one day. Whatever little capacity I have, I am always there to help you, guide you, so that today I think
Last year, around 25 lakh girls were covered under Mission Pink Health. Let us have a target to Very cover nice. another Good number. Yes. it's 25 very lakhs good in this particular year. In another 2 to 3 years, we should reach 100,000. And I'll tell you, before I end, that at the world scenario, if you'll see all other national medical associations, most of them are led by women doctors. May it be American Medical Association, British Medical Association, French Medical Association, lot of women leaders. In fact, the current president of World Medical Association is one Dr. Heidi from Sweden. But when I compare it with Indian Medical Association, my head goes down. This needs to be changed. We need The scene is changing more and women leaders to yeah, come up at more the women national level. coming. Yes. And so let us take this pledge. We will see to it. We empower more and more of our women colleagues also. Discrimination should stop from our own house. Then from our own association, Indian Medical Association. Then we have a moral right to teach others that yes, don't do this. Educate, counsel the boys also. That is also very important. And together we will be able to do it. We started this journey at a very small level, and today I'm really very happy. Whenever I see the excellent programs conducted throughout the country, I once again congratulate IMA Uttar Pradesh team and wish you all the best. Thank you. Jai Hind, Jai IMA. Thank you, sir. Thank you, Dr. Thank you, sir. Vankirkar. Thank you, sir. Thank you, Dr. sir, Meena ji. for your. if you allow, I am Vice Chairperson Dr. Pratibha Gupta, Gorakhpur. Ma'am, if you allow, I want to proceed with the share. program. Ma'am, we'll proceed with the program. We have I'm so sorry to interrupt you in between. Yeah. Dr. Anamika, I just Haan. wanted to say a little thing. I want to congratulate Vankirkar sir and madam for letting sir wear pink coat today. That is our dress code. Thank you, sir, for that. Thank you, sir, for the kind motivating words. Yes, it is बहुत अच्छा लगता है to see your child grow, and Mission Pink Health is your child. We can definitely relate to that, how you must be feeling when you see it growing. Anemia prevalence quite high है. उत्तर प्रदेश में हमें और ज़्यादा मिला है सर. Usual जो national level पे है 51-52%, उससे बहुत ज़्यादा we have seen in UP in all districts. So we are trying to do some intensivized, focused programs for anemia prevention. जैसा कि अरुणा मैम ने कहा, I'll just share because we are running short of time. 1-2 मिनट में कि डाइट की जो मैम ने बात की, we are in talks with certain organizations जो न्यूट्रिशन पे ही काम करते हैं, and not only nutrition, how to grow that food. तो थोड़ा और भी आगे जाके उससे काम करते हैं, so that we are able to connect all those identified 2000 and dietary one-to-one counseling. We are just trying to put efforts for that also. So thank you so much, sir. So we'll proceed with our program. And before we start, I would like to say कि mothers हैं हमारे साथ. Like I said earlier, उनकी अपनी share of hardships थी, but they raised their daughters in a way that they become an example to the society. And daughters के भी कुछ troubled times रहे होंगे, but still they overcame that in a very brave manner. They took it as a pinch of salt and continued with all kind of grit and determination, and they were able to achieve something. तो अब हम start करते हैं. We are going to interact with certain mother-daughter duo जो हमारे साथ हैं. They have been waiting quite patiently. I'm so thankful to them. तो हमारी डॉटर से आज कई लोग प्रेरणा ले सकते हैं, और कन्या तो कुछ ना कुछ देती ही है सबको हमेशा, और देश की बेटियों ने मतलब भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सबका गौरव बढ़ाया है. तो हम शुरू करते हैं. जैसा कि सभी ने बीच में बोला कि हमें अगर उड़ान पंख मिल जाएं तो मैं कहाँ से कहाँ उड़ जाऊं, शायद स्पेस में चली जाऊं. तो आई वुड लाइक टू इनवाइट डॉक्टर अरुणा मित्तल, गायनेकोलॉजिस्ट है मैडम अलीगढ़ से, और उनकी डॉटर है मिनी गुप्ता, एंड शी इज परसुइंग डॉक्टरेट इन स्पेस साइंस.
That was so fascinating when I came across उन्होंने भेजा जब picture. I would like to invite ma'am and Miss Minnie. आप अपना, you please give your introduction because you would be a better person to introduce yourself. Please, ma'am. Dr. Aruna Mittal. Ma'am, are you there? Dr. Neha, Dr. Aruna है क्या? Dr. Aruna, please. Yes, ma'am. Aruna, ma'am, please unmute yourself. Hello. Hello, am I audible? Yes, Yeah, Dr. ma'am, you are Aruna. audible. नमस्कार। मिनी भी है ना साथ में मैम? जी, हाँ, right. मैं डॉक्टर अरुणा मित्तल हूँ, अलीगढ़ से WDW की चेयरपर्सन हूँ और मेरी बिटिया है मिनी, ये 22 years की थी. She left home and she went abroad to pursue her masters in space science, and now she is pursuing PhD doctorate in space science. She is right now at the Longyearbyen. It's the last man habitat in the planet Earth towards the Arctic pole. मैं चाहती हूँ मिनी खुद ही अपने बारे में बताएं. थैंक यू मम्मा. तो आपने ज़्यादातर इंट्रोडक्शन तो दे ही दिया है. तो जब मैं निकली थी घर से मास्टर्स करने के लिए, तब एक्चुअली मेरे घर पे बस एक मेरी मम्मी थी जिन्होंने मेरे ड्रीम्स को सपोर्ट किया और मेरे को भी सपोर्ट किया पूरा, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली एंड फाइनेंशियली टू. तो मास्टर्स करने के बाद में फिर मैंने 2.5 साल तक फ्रांस की स्पेस एजेंसी में काम किया था. फिर मैंने 1 साल पहले अपनी जॉब छोड़ के PhD करने का फैसला लिया और फिर मैं तब से नॉर्वे में रह रही हूँ. और जैसे किसी ने अभी पहले मेंशन किया था कि नॉर्वे में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रेशो है और आपको ज़्यादातर हाई पोजीशंस पे ऑलमोस्ट 50% फीमेल्स मिलेंगी और 50% मेल्स मिलेंगे. तो बहुत ही एनकरेजिंग लगता है यहाँ पे आके, जो कि अभी तक इससे पहले मैं जितनी भी कंट्रीज में रही हुई हूँ वहाँ पे नहीं था, चाहे वो फ्रांस था, बेल्जियम, स्वीडन, जर्मनी. पर नॉर्वे में एक बहुत ही एनकरेजिंग चीज़ है. और इस वक्त मैं नॉर्थ पोल पे हूँ और मैं नदर्न लाइट्स पे रिसर्च कर रही हूँ. और यहाँ पे भी ज़्यादातर लड़कियाँ ही हैं. इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट एनवायरमेंटल कंडीशंस में जहाँ पे -40 डिग्री सेल्सियस चला जाता है, 6 महीने तक सुबह नहीं होती, तो हम लोग सिर्फ रात में रहते हैं. तो हमें ये विटामिन D के टैबलेट्स लेने पड़ते हैं अपनी न्यूट्रिशन को मैनेज करने के लिए. और तो इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट कंडीशंस में जहाँ पे हमारी जान को खतरा होता है पोलर बियर्स से, तो हम लोग को हमेशा एक राइफल कैरी करनी पड़ती है अपने साथ में और एवलांचेस होते. तो इसके बाद भी ज़्यादातर आपको यहाँ पे लड़कियाँ ही दिखेंगी, लड़के इतने ज़्यादा नहीं दिखेंगे. तो आई थिंक ये खुद में एक बहुत ही आई थिंक इंस्पायरिंग बात है कि कितनी भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लिविंग कंडीशंस या वर्किंग कंडीशंस क्यों नहीं हो, लड़कियां कभी हिचकिचाती नहीं हैं और हमेशा अडेप्ट कर लेती हैं. तो अगर आपके घर में एक बेटी है तो फिर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझिए, क्योंकि वो बहुत कुछ अचीव करने की क्षमता रखते हैं. तो वो आपके घर की प्राइड हो सकती है. ज़्यादातर जो हम लोग भी फीमेल एस्ट्रोनॉट्स को जानते हैं, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, सबने अपने देश को बहुत प्राउड किया है. तो फिर ये एक बहुत ही लक की बात है घर पे बेटी होना और एक स्ट्रॉन्ग मदर होना. तो मुझे अपनी एजुकेशन के लिए भी सबसे ज़्यादा प्रेरणा अपनी मम्मी से मिली थी, जिन्होंने 54 की एज में और पढ़ने का स्टेप उठाया. तो वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग था कि जब मम्मी इतनी ज़्यादा एज में और पढ़ सकती है तो मैं मास्टर्स क्यों नहीं कर सकती, PhD क्यों नहीं कर सकती. तो thank you so much for giving me your time. Thank you, beta. It was so pleasant talking to you, listening to your sweet words. बहुत अच्छा है. मुझे आशा है कि पार्टिसिपेंट्स में बहुत लोग प्रेरणा ले रहे होंगे आपसे. थोड़ा सा मैं लिस्ट को ब्रेक करूंगी एंड आई एम सो सॉरी फॉर दैट बिकॉज डॉक्टर नीता फ्रॉम हापुड़, डॉक्टर नीता शर्मा, शी हैज बीन मैसेजिंग हर डॉटर डॉक्टर दिविशा शर्मा, शी इज इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट. तो शायद उनकी ICU में ड्यूटी है और शी वांटेड टू स्पीक ना, बीच में थोड़ा सा शायद 1-आध मिनट बोल पाएंगी. तो इसलिए आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज विद अदर पार्टिसिपेंट्स. मैं उनको बीच में ले आती हूँ बोलने के लिए. मैम नीता, आप हैं क्या? Mama, you there? Yes, Dr. Divisha. Yeah, Dr. Divisha.
Hi, Yes. everybody. Hello. We can hear you. Yeah. Just 1 second. I'll text mom so that she knows I'm here. Yeah. And Dr. Divisha, Mama, you let can me tell unmute you, too if you yeah, want. Dr. Divisha, let me tell you, she's infectious disease specialist in Manatee Memorial Hospital, Bradenton, Florida, USA. Hope I'm pronouncing that correct. That was Yeah. correct. Thank you Yeah. so much for the Okay. introduction. Right. So I am the daughter for Dr. Neeta Sharma, who's an OB-GYN in Hapur, and my father just recently passed away. He was a pediatrician, Dr. Sunil Kumar Sharma. And both of them have been working in the field of medicine for the longest of the times. I myself, Divisha, I moved here in 2016 and took all my exams, got motivated by my family, and did my internal medicine residency, and then got accepted into fellowship into infectious disease, which is basically focusing on COVID-19 infections, a lot of research with the CDC, HIV and hepatitis. Endocarditis is very common here as well. But I wouldn't have been here without the support of obviously my mom, who's an extremely hardworking and courageous woman. I have never met a more badass, if that is the correct word to say, than my mother. We've been through our hardships, and every family has their own hardships. Obviously, money was not our problem. I was born with a silver spoon, unlike my mother, who had to fight a lot to be where she is in her life and be this successful after beating all of the odds. Now she is one of 4 kids and the only doctor from her family. But I was always motivated by her to work as hard as possible. She always said, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके कितने अच्छे नंबर आते हैं, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है कि आप कितने अच्छे इंसान हो। मैं नहीं कहूंगी कि मुझे बिल्कुल लड़कों की तरह पाला गया, लड़कियों को हमेशा से ज्यादा ध्यान से पाला जाता है, ज्यादा डायरेक्शन दी जाती है उनके टीनेज ईयर्स में, ज्यादा मल्टीविटामिन भी दिए जाते हैं, और इस गाइडेंस के साथ मैं जहाँ हूँ, people come up to me at this position and still try to, obviously everybody gets men explained and men powered all over the world, but I always treat everybody with a lot of respect. Recently मेरे पापा का liver transplant हुआ, जिसमें लाइव डोनर की जरूरत थी, और मेरे दोनों भाई कभी पीछे नहीं हटे, पर पापा को मेरा लिवर दिया गया, जिसमें बहुत सारी मीटिंग्स में मेरी मम्मी गई और काउंसलर्स ने बहुत क्वेश्चन करे कि आप बेटी को टॉर्चर कर रही हैं क्या, बेटी क्यों दे रही है लिवर। तो मम्मी ने यही कहा कि हमने कभी डिफरेंशिएट नहीं करा, और अगर तीनों बच्चों में से कोई भी लिवर देना चाहता है तो हम नहीं फर्क करेंगे कि बेटी देना चाहती है या बेटा देना चाहता है, और बेटी देना चाहती है तो कोई बात नहीं। तो फिर सर्जरी के बाद मैं हीमोग्लोबिन 6, मेरा हीमोग्लोबिन 6 था जब मैं आईसीयू से डिस्चार्ज हुई, और मैं व्हील चेयर पे वापस अमेरिका आई कुछ हफ्ते पहले। अब मैं भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ, कोविड-19 पेशेंट्स का ध्यान रख रही हूँ, N95 मास्क पहन के सेंट्रल लाइंस और फेमोरल लाइंस और डायलिसिस कैथेटर्स डाल रही हूँ आईसीयू में, सिर्फ इसी हिम्मत के साथ कि मेरी मम्मी मेरे साथ हैं। So thank you for having us to speak on some motivation for Girl Child Week. And it's an honor to be speaking in front of all of the doctors and all of the audiences. If any motivation I can say is empowered women, empower women. So keep empowering every woman you know, give them all the strength, and keep working hard to improve the society. If given a chance, I would definitely come back and help out. My mom, the society, and everybody else I can. I still know there are cases of dowry, and they still burn females down. There's still battered women all over the country requiring help. We can start slow. We can start from maybe our maids, help them out, see who else they can help out, and our patients, and then their family members, and so on. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you so much, Divisha. Thank you for sparing your time out from such a busy schedule. And it really, your story is giving goosebumps
to us. It's really motivating, and I'm sure everybody in the audience and the participants and everybody here is certainly moved. And like I said earlier, it's not impossible. Everyone has his or her own share of hardship. So kudos to you, the way you faced the problem. And may God bless you with lots and lots of love. Thank you for being here with us. Thank you, Divisha. Yeah, thank you, ma'am. So, next mother-daughter duo from Aligarh, Dr. Divya, chairperson, and her daughter, Miss Devanshi Sharma. She's MBBS final year student. तो बेटा देवांशी, डॉक्टर दिव्या. हेलो मैं तो बहुत कुछ बोल ही चुकी हूँ. देवांशी बहुत नॉटी चाइल्ड थी छोटी होने में, लेकिन बहुत शी इज वेरी ओबीडियंट ऑल्सो एंड शी इज अ वेरी लविंग चाइल्ड. देवांशी की सबसे अच्छी बात यह है कि वो कोई भी काम हो सकता है अपने लिए ना करे, लेकिन वो दूसरे के लिए जरूर करेगी. आप उसे कहोगे कि देवांशी तुम्हें सुबह 4 बजे उठ के, मुझे 1 महीने तक 4 बजे उठ के जाना है और तुम्हें मेरा नाश्ता बना के देना है, शी विल डू इट फॉर यू ऑलवेज. मे बी शी विल नॉट make breakfast for herself. So that is the best thing about her I like. Devanshi, are you there? Mama, I'm there. Please go ahead. Hello, I'm Devanshi और मैं फाइनल ईयर मेडिकल स्टूडेंट हूँ. और वो जो मैंने ऑब्जर्व किया है मेडिकल कॉलेज में आके कि आजकल आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारे रूरल एरियाज में लड़कियां नहीं पढ़ रही हैं क्योंकि आपका माइंडसेट ऐसा है कि लड़कियों को जल्दी शादी कर देनी चाहिए या दे बिलोंग टू द किचन. पर अब जब मैं मेडिकल कॉलेज में आई हूँ तो मैं एक्चुअली देख रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियां हैं जो डॉक्टर बनना चाहती हैं या बहुत सारे अदर फील्ड्स, बहुत सारे दूसरे फील्ड्स में हैं. IITians are girls now. Girls are taking mechanical branches and they are going into orthopedics, which is said to be a male branch. Even लड़के भी, it's not just about girls, लड़के भी आजकल gynecology ले रहे हैं and everything. पर the factor is कि मैं अगर आज मेडिकल कर रही हूँ तो it's definitely because of my parents. Not just my mom, even my dad. I don't believe in the word feminist because I think feminism आजकल it's about superiority, not equality. My dad has always kept every girl in my family equal to boys. अगर घर में ऐसा कभी हुआ नहीं है, पर अगर घर में एक रोटी होगी तो वो आधी लड़के को मिलेगी और आधी लड़के को मिलेगी. इट्स नेवर के लड़के को ज्यादा मिलेगी. एंड आई एम वेरी ग्लैड. एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो इंडियन फैमिलीज में हम फेस करते हैं, जो मुझे लगता है कि लड़कियों को बचपन से बोला जाता है अरे तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, अरे तुम अपने घर जाओगी तब करना, या अपने पति के साथ घूमना. तो दिस इज अ फैक्टर कि बच्चों को पता होना चाहिए कि वो उनका घर है, वो वहां रहना चाहते हैं. तो मैंने कभी ये फेस नहीं किया. आई एम वेरी ग्लैड. अब हम वी आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज, बट स्टिल जब गर्ल एजुकेशन की बात आती है वी स्टैंड क्वाइट लो. और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें एक्चुअली लड़कियों को खुद पता होना चाहिए कि उनकी एजुकेशन उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है. जब तक हमें नहीं पता होगा कि उसके बेनिफिट्स क्या होंगे, तब तक हम थ्राइव किसी चीज के लिए तब करते हैं जब उसके बेनिफिट्स पता होते हैं, वो हमारा ड्रीम होता है. आप किसी को भी पुश नहीं कर सकते किसी चीज के लिए जिसका जब तक किसी चीज का करने का मन नहीं करेगा, यू कांट पुश देम. तो पॉइंट ये नहीं है कि आप धक्के से बच्चों को स्कूल भेज दो या आप धक्के से उनको बोलो कि यू गो एंड स्टडी. यू शुड टेल देम कि पढ़ाई इंपॉर्टेंट क्यों है. बस दिस इज ऑल आई वांटेड टू से. और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मुझे लगती है कि पापा का सपोर्ट बहुत इम्पोर्टेंट होता है. ऑफ कोर्स मम्मी बहुत कुछ करती हैं, वो लड़ती हैं और सब, पर मम्मी को लड़ने की जरूरत क्यों पड़ती है? मेरे हिसाब से जरूरत नहीं. वो एनर्जी किसी और बेटर चीज में यूज कर सकते हैं. जितना टाइम वो पापा से लड़ने में लगाएंगी कि नहीं मेरे बच्चे को पढ़ने दो, उससे बेटर ये है कि मम्मी बच्चे को पढ़ाने में वो टाइम लगाए. This is all I wanted to say. Thank you so much. Thank you, beta. Thank you. So nice of you. And like as you said, कि अंदर से इच्छा बहुत जरूरी है, तो वो इच्छा शक्ति भी बेटियों में हो तो और 4 चांद लग जाते हैं उनके accomplishment में. Now I would request Dr. Shabana Rafiq. She is gynecologist in Banda, renowned gynecologist of Banda. And her daughter, Dr. Saima Rafiq.
She is OBGYN consultant, Innova Hospital, Alexandria, Virginia, USA. Ma'am, Dr. Shabana ma'am. शबाना मैम प्लीज अपने अनम्यूट कर लीजिए। हेलो। हाँ मैम, आवाज आ रही है। हाँ आवाज आ रही। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉक्टर साइमा भी है मैम? नहीं, Dr. Saima is not there. She left the meeting because her father-in-law is very serious in Escort, Delhi, and her husband has to catch the flight to India. So she left just now. It's okay, ma'am. It's another example of the, dedication we all daughters and mothers have for our families. You please carry on, ma'am. Yeah, actually, this project Mission Pink Health, मैं बहुत दिनों से इसी के उसमें मैं बहुत दिनों से काम कर रही हूँ। मेरा एक सोसाइटी है चिराग फाउंडेशन, जिससे मैं पिछले 12 सालों से यहाँ पर एनीमिया के ऊपर और वुमेन्स हेल्थ और एजुकेशन के ऊपर काम कर रही हूँ। हम लोग वैसे बेसिकली लड़कियों को अडॉप्ट करते हैं जो फाइनेंशियल रीजन से अपनी एजुकेशन को ब्रेक कर देती हैं, और उसके साथ में उनके हेल्थ के लिए भी बहुत कुछ काम करते हैं, हेल्थ चेकअप कैंप्स इन स्लम एरियाज। तो हमने कई बार स्लम एरिया में हीमोग्लोबिन चेक कराया, कम से कम 1000 गर्ल्स का हीमोग्लोबिन विद इन दिस पीरियड चेक किया गया। और टू माय अटर सरप्राइज मैंने ये देखा कि जो लेडीज हमारे एज की थी उनका हीमोग्लोबिन तो बहुत अच्छा था, 14, 15, 16 था, लेकिन जो 20 ईयर से बिलो लड़कियां थी वो उनका हीमोग्लोबिन बहुत था, 4 to 8, 9, not more than 9. तो this is a very difficult situation for us, especially for the adolescent girls. हमें इसके रीजन को सर्च आउट करना है और उसको देखना है। उसके बाद मैंने उस सब स्लम एरिया में डिवॉर्मिंग कराई, उनको आयरन और फोलिक एसिड डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ये मिशन पिंक हेल्थ बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और हमको इसको बहुत अच्छी तरह से हर डिस्ट्रिक्ट में कंडक्ट करना है। मैं आप लोगों ने सबने मुझे इसका यहाँ का चेयरपर्सन बनाया और मैं यहाँ की IMA वाइस प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरे हस्बैंड डॉक्टर मोहम्मद रफीक IMA प्रेसिडेंट है and I am IMA vice president. If Dr. Aruna Narayan remember me, I am 1 year junior to her in GSVM. Oh. Wife of Dr. Mohammed Rafiq, and he was very close to Dr. Narayan, cardiologist of Lucknow. We met him and her many times with patients in his clinic. So it is very good. My daughter, Dr. Saima Rafiq. हेलो मैम। हाँ हेलो। मेरी डॉक्टर साइमा रफीक ने अपनी बेसिक स्कूलिंग तो यहीं बांदा से की, उसके बाद वो उसने अपना MBBS और PG अलीगढ़ से की। आफ्टर मैरिज शी वेंट टू USA with her husband. So there she cleared US MLE, and with high rank she got Ops and Gynecology there. She is very decent, very a graceful girl. She was very popular here in Banda, in Lucknow and everywhere. वो बहुत ही एक हाउस होल्ड और प्लस एजुकेशन प्लस सोसाइटी सबका एक मिला जुला कॉम्बिनेशन है। मैं इतने वर्ल्ड घूमी, मैं बहुत वर्ल्ड घूमी। एक बात आज मैं कहना चाहूंगी कि हमारी इंडियन लेडीज जो हैं उसमें उनको मैं सलाम करती हूँ, उनके आगे नतमस्तक होती हूँ कि उन्होंने जितनी अच्छी तरह से अपना परिवार, समाज, एजुकेशन और प्रोफेशन सबको निभाया है वैसा किसी कंट्री में मैंने नहीं देखा। जितनी अच्छी तरह इंडियन गर्ल्स हैं और लेडीज हैं, मैं सबको देखती हूँ कि उन्होंने कितनी अच्छी तरह से अपनी लाइफ को मैनेज किया, ऐसे दूसरी कंट्रीज में नहीं है। आज जहां तक मैं ये कहना चाहूंगी कि एक देयर इज नो वन गर्ल चाइल्ड डे, एवरी डे इज गर्ल चाइल्ड डे, और हमें इन बातों को बहुत अच्छी तरह से सोचना है। अभी वो जो इसमें अभी बेटी जो बोली कि कुछ प्रॉब्लम्स हमारे देश में क्यों बेटियों के साथ हो गई, हमें इस पे विचार करना है, उनके हमको तह में जाना है कि ऐसा क्यों है।
हमारे यहाँ क्यों डॉटर्स नेग्लेक्टेड हैं? जब तक हम इस बात पे नहीं सोचेंगे तो उसमें एक शब्द जो मैं बार बार कहना चाहती हूँ, उसने डाउरी का नाम लिया है। हम जब तक इस दानव, दहेज के दानव से नहीं निकलेंगे, लड़कियों का उद्धार नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगी, कोई दूसरा आके ये नहीं करेगा, इसको लड़कियों को खुद ही उठना है, खुद ही इसका विरोध करना है, महिलाओं को विरोध करना है। जिस दिन ये खत्म, हाँ, कम से कम हमारी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। एजुकेशन अब मैं बहुत स्मॉल टाउन में हूँ, मैं देख रही हूँ सभी लड़कियां करीब करीब पढ़ रही हैं, छोटे छोटे घरों की, गांव की लेडीज हैं, वो भी पढ़ लिख के किसी BTC करके सब कुछ कर रही हैं। लेकिन कुछ समस्याएं अभी वहीं की वहीं हैं, जिसमें हमको नंबर 1 न्यूट्रिशन और जो सोशल हमारे लेडीज के ऊपर जो सोशल एनिग्माज हैं उनको हमको दूर करना है। न्यूट्रिशन बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हमने देखा कि बड़ी फैमिली की, रिच फैमिली की जो लड़कियां आती हैं उनकी हेल्थ नहीं अच्छी होती, उनका हीमोग्लोबिन कम होता है, वो ओबीज होती हैं, लेकिन उसमें एनर्जी नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं किसी लेवल पर हमको ये सिखाना है कि जो खाना हम खाते थे अपने जमाने में, हम लोग में आज ज्यादा एनर्जी है, वी आर ऑल of them are above 50 and 60, but we have more energy than an adolescent girl of 10 or 12 or 13 years. We should go back to that age old food of green leafy vegetables, fruits, milk and curds, and say no to all fast food. Thanks for inviting me. थैंक यू मैम। और शायद ही बांदा में कोई ऐसा शख्स होगा जो आपकी शख्सियत से रूबरू ना हो मैम। एंड थैंक यू। मालूम है। थैंक यू मैम शामिल होने के लिए। और बहुत सही आपने कहा कि लेकिन चीजें सुधर रही हैं। हाँ, बेसिक शिक्षा में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी जैसा हमने मूवी में भी देखा, हायर एजुकेशन में अभी भी बहुत सी लड़कियां हैं जो आगे नहीं पढ़ पाती ग्रेजुएशन के बाद। प्रोफेशनली तभी जाएंगी जब हायर एजुकेशन होगी या ग्रेजुएशन करेंगी। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर कैप्टन PL मिश्रा मैम को। मैम गायनेकोलॉजिस्ट हैं बस्ती में, रेनाउंड गायनेकोलॉजिस्ट, और उनकी 2 बेटियां आज हमारे साथ जुड़ी हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हैं अभी बीच में हमारे साथ। यस मैम। ठीक है। तो डॉक्टर पद्मिनी मिश्रा एंड Miss Padmini Mishra and Dr. Meenakshi. So Padmini is computer engineer from USA, and Meenakshi is pathologist from Jaipur. Yes, please. मम्मी आप पहले स्टार्ट करें। हाँ, मम्मी स्टार्ट करेंगी। राइट। म्यूट है, माइक म्यूट है। मैम आप अनम्यूट करिए डॉक्टर मिश्रा मैम। मैं डॉक्टर कैप्टन पुष्पलता मिश्रा, चेयरपर्सन मिशन पिंक हेल्थ बस्ती, तथा मेरी 2 बेटियां इंजीनियर पद्मिनी मिश्रा फ्रॉम USA एंड डॉक्टर मीनाक्षी जोशी जयपुर से आपके इस प्रोग्राम के में शिक्षा का लड़कियों के जीवन में कितना महत्व है, अपने विचार एवं अपने अनुभवों को शेयर करना चाहती हैं। हम लोगों को यह अवसर प्रदान करने के लिए अपनी स्टेट चेयरपर्सन MPS डॉक्टर दिव्या चौधरी एंड सेक्रेटरी डॉक्टर अनामिका पांडे को धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग इससे जुड़कर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मेरी कर्मस्थली बस्ती है, परंतु जन्मस्थली एवं शिक्षा गोरखपुर से हुई। उच्च शिक्षा के लिए मैंने अपना शहर गोरखपुर छोड़ा और दिल्ली में लेडी हार्डिंग में मैंने अपने मेडिकल एजुकेशन कंप्लीट किया। मैंने देखा कि मेरे घर में मैं पहली लड़की थी जो हायर एजुकेशन के लिए गई अपने शहर को छोड़कर। मेल मेंबर्स में हमारे यहाँ 2-3 लोग थे जो विदेश में भी गए थे, पर लड़कियां कोई नहीं गई थी। तो मैंने ये एक हमारे लिए अचीवमेंट था और ये मुझे ऐसा अवसर मैं अपने बच्चों को देना चाहती थी जो मुझे नहीं मिला। फिर मैंने अपनी शिक्षा पूर्ण करके मैंने आर्मी ज्वाइन किया, मेडिकल कोर, और 71 वॉर में ज्वाइन किया और मैंने राष्ट्र सेवा की। तो इस तरह से लड़कियों को हायर एजुकेशन देने के बाद मैं धीरे धीरे आगे बढ़ती गई और अपने भाई बहनों सभी के लिए प्रेरणा स्रोत बन गई। इस तरह से एक लड़की को शिक्षित करने से 2 परिवार, समाज
एवं राष्ट्र का विकास होता है। गर्ल एजुकेशन का महत्व बहुमुखी है। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ तथा माइक को अपनी बड़ी बेटी इंजीनियर पद्मिनी मिश्रा को हैंडओवर कर रही हूँ, वो अपने अनुभव शेयर करें। हाँ, थैंक यू। हाँ, थैंक यू मम्मी। मेरा नाम पद्मिनी मिश्रा है और जैसा आपने अभी सुना, मेरी मम्मी डॉक्टर कैप्टन पीएल मिश्रा हैं, जो मिशन पिंक हेल्थ बस्ती में लीड करती हैं। मेरा एजुकेशन हाई स्कूल तक तो बस्ती में ही हुआ और उसके बाद मैंने बिट्स पिलानी से बीई इन कंप्यूटर साइंस किया और फिर हायर एजुकेशन के लिए यूएसए गई और तब से यहीं यूएसए में हूँ अपने हस्बैंड और बच्चों के साथ। I've been working as a computer engineer ever since finishing my masters in US. मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मेरे माता पिता ने हमेशा एजुकेशन वैल्यू किया। मेरी मम्मी अपने क्लिनिक के बिजी स्केड्यूल के बाद भी मेरे एजुकेशन पे और हम सबके एजुकेशन पे टाइम स्पेंड करती थी। However, for vast majority of girls in my town, inequality in access to education was a real thing. Many of my friends were told by their families to work on studies only after having finished the household chores and cooking and taking care of everybody in the family, because that was their primary importance. It was important for them to learn that education was only secondary. So, but as we all know, कि ये important है, सबको self sufficient होना चाहिए, अपना ख्याल खुद रखना चाहिए, but education is very important as well, ताकि उससे women financially self sufficient हो सकें and can work towards gender equality for future generations. So I'm very thankful to my mother and for having given me the privilege to have equal or better education than majority of the girls. I'm very happy also to see her doing all this work in Mission Pink Health, and for all of you in Mission Pink Health working towards this goal of making gender equality a reality with all your programs and all your hard work. Thank you very much and keep up your good work, please. Yeah, thank you, Padmini, for being with us. Just I'll share one incident with you. कि जब we used to call ना, ma'am used to go for camps, anemia checkup camp, and she used to say, मेरी daughters बोलती हैं कि आप कोविड में क्यों गए बाहर? You didn't use the mask. You didn't use. I mean, you were not using like full precautions. So frequently she shares how you care for her. So yeah, Dr. Meenakshi. Good evening, everyone. जैसा कि मम्मी ने कहा कि मम्मी she was the only one who went for the higher education in her family, और उन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया आगे बढ़ने के लिए, और ना ही स्टडीज में, मैं कहूँगी एक ओवरऑल डेवलपमेंटल एनवायरनमेंट मेरे पापा मम्मी ने मुझे दिया। एंड म्यूजिक हो, आर्ट हो, इवन उस टाइम पे उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट्स, सेल्फ डिफेंस में भी ट्रेनिंग लेने का मौका दिया। तो चैलेंजेस तो थे बिकॉज न्यूक्लियर फैमिली में हम लोग रहते थे एंड मम्मी पापा का बिजी शेड्यूल होता था, बट दे ऑलवेज बिलीव्ड इन अस एंड उन्होंने हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और हाँ, ऑफ कोर्स मैं डॉक्टर मेरे मम्मी पापा की वजह से ही हूँ, और जहां भी मैं हूँ उनका ही इसमें सहयोग रहा है हमेशा, फाइनेंशियली हो या मेंटली हो, दे हैव ऑलवेज बीन सपोर्टिव एंड आई एम सो लकी एंड प्राउड टू हैव सच पेरेंट्स। मम्मी का तो देखती रहती हूँ मैं, शी इज सो एक्टिव इन दिस एज विच इज ऑल्सो वेरी मच एनकरेजिंग फॉर मी। हालांकि मैं शायद उनका 1/4 भी दोनों लोगों का नहीं कर पाती हूँ जितना मेरे पापा मम्मी एक्टिव हैं, बट और यस, कोविड टाइम्स में मैंने मम्मी की बहुत जान खाई थी फॉर द मास्क एंड फॉर द प्रोटेक्शन एंड नॉट गोइंग आउटसाइड, बिकॉज my husband is a chest physician and we see a lot of COVID patients, especially elderly people, even now. So मैंने थोड़ा उनको ज्यादा परेशान किया है इस चीज के। And yes, girl empowerment is very important. Not only education, but I would say कि ऐसा education जो उनको financially support करे।
ऐसा उनको होना चाहिए कि दे सपोर्ट देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज फाइनेंशियली. ऑफ कोर्स हाउस होल्ड चोर्स भी आने चाहिए, इवन नॉट ओनली गर्ल्स, बॉयज को भी आने चाहिए. बट यस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ फीमेल्स लाइफ. So I thank you, Papa and Mummy, for everything. Thank you, Padmini and Meenakshi. Very rightly you highlighted what are the challenges you have had in the small town, like during your education and all. But our takeaway is how you overcame all that, and you are here with your accomplishments, speaking to us and motivating us. Thank you so much for being with us. So we proceed with our program with now Gonda se Dr. Renu Agarwal is with us. She's a renowned gynecologist Gonda mein, and her daughter Dhwani, she is ophthalmic surgeon in Safdarjung Hospital, New Delhi. Ma'am? Yeah. जी ma'am. नमस्ते. आप अनम्यूट हैं मैम. ओ सॉरी, म्यूट हैं. आई एम सॉरी. नहीं, मैं अनम्यूट की थी लेकिन क्या म्यूट हो. जी. थैंक्स डॉक्टर अनामिका एंड डॉक्टर दिव्या मुझे प्लेटफॉर्म देने के लिए. मैं डॉक्टर रेणु अग्रवाल गोंडा के MPH एंड WDW की प्रेसिडेंट हूँ. मैं केवल यहाँ अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो कि लास्ट 6 ईयर्स से जो कि MPH का है, गांव चलो स्कूल चलो वाला ही है. हम लोग एक छोटा सा एक घर लिए हुए हैं जिसमें हम लोग करीब 14 गर्ल्स को फ्रॉम 2nd to 8th क्लास तक लुक आफ्टर कर रहे हैं. उन लोग को हम लोग स्कूल भेजते हैं. उन लोग को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज लाइक समचिप्स पापड़ है, रुई की बत्तियां हैं, कुछ सिलाई कढ़ाई है, पार्लर का है, ये सिखाने के अलावा पढ़ाई वो लोग करती हैं. अपने स्कूल में स्पोर्ट्स में, ड्रामेज में, इन सब में पार्टिसिपेट भी करती हैं. इस तरह से कि एक छोटी सी कोशिश है हमारी समाज में कि जो सोशियो इकोनॉमिकली पुअर हैं, गांव में हैं, कुछ लड़कियां सपेरों की हैं, कुछ बंजारों की हैं, वो लोग ऑर्फनेज नहीं है, वो लोग के पेरेंट्स हैं, लेकिन या तो पेरेंट्स इंटरेस्टेड नहीं है या कैपेबल नहीं है जो कि अपने बच्चों को पढ़ा सके. तो उन गर्ल्स को लेके हम लोग लास्ट 6 ईयर्स से पढ़ा रहे हैं. और MPH और इसका तो प्लेटफॉर्म हमें और मिला ही है, इसके लिए हम काम कर ही रहे हैं. लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और शेयर करूंगी. एक साइलेंट कैरेक्टर जो फादर नाम का होता है, जिसकी हर बेटी होती है, तो उसके बिना सपोर्ट के, उसके बिना हेल्प के हम भी शायद उतना हेल्प नहीं कर सकते, अपने बच्चियों को उतना आगे नहीं बढ़ा सकते हैं. तो एक फादर के उद्गार है जो अपनी विदाई पे अपनी बेटी को देता है, वो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगी. कन्यादान नहीं करूंगा, जाओ, मैं नहीं मानता इसे, क्योंकि मेरी बेटी कोई चीज नहीं जिसको दान में दे दूं. मैं बांधता हूँ बेटी तुम्हें एक पवित्र बंधन में, पति के साथ मिलकर निभाना तुम. मैं तुम्हें अलविदा नहीं कह रहा, आज से तुम्हारे 2 घर, जब जी चाहे आना तुम, जहां जहां रही हो खूब प्यार बरसाना तुम, सबको अपना बनाना तुम, पर कभी भी ना मर मर के जीना, ना जी जी के मरना तुम अन्नपूर्णा, शक्ति, रति सब तुम, जिंदगी को भरपूर जीना तुम, ना तुम बेचारी ना तुम अबला, खुद को असहाय कभी ना समझना तुम. मैं दान नहीं कर रहा तुम्हें, मोहब्बत के एक और बंधन में बांध रहा हूँ, इसे बखूबी निभाना तुम. ओवर टू ध्वनि, माय डॉटर, माय प्राइड. ध्वनि बेटा, क्या? Good evening, everyone. Congratulations for the great initiative. It's a pleasure to be part of it. And above all, it's been broadcasted, so more the merrier. I remember starting में session में किसी ने बोला था कि hardships थी, discrimination था, and I feel very privileged to come from a family line जहाँ पे she और ambitious एक साथ लगाओ तो discouraging नहीं होता, वो हमेशा motivate होता है. So I'm grateful to belong to a family line जहाँ पे I've seen fighters grow, whether that be my mom, मौसी और नानी. इन्होंने हमेशा मुझे encourage किया है कि I was never empowered. It came naturally कि equal हो. Also, these guys have never met themselves at a compromising state. चाहे वो friends हो, family हो, career हो, passion हो. They have the capability of bringing small things together with uttermost dedication and delight, create an empire and inspire everyone around. So I'm very thankful कि मुझे liberty मिली to look at someone and see them as a person, male या female नहीं. And I really hope that this initiative brings the same kind of liberty to all the girl child around. Thank you so much. Thank you, beta.
और डॉक्टर रेनू का जो ये इन्वॉल्वमेंट है अपना गर्ल चाइल्ड कुछ लोगों को एजुकेट करने का अंडर प्रिविलेज, so that is a very good example of people's involvement और community involvement and commitment. हमारा क्या कमिटमेंट होना चाहिए. थैंक यू सो मच बेटा. मुझे लगता है सोसाइटी को कुछ अपन कर सकते हैं इससे. राइट मैम, थैंक यू. थैंक्स अनामिका. थैंक यू. प्रोसीडिंग फर्दर, वी हैव नाउ फ्रॉम गोरखपुर our very dynamic Dr. Deepti Chaturvedi. She is a renowned gynecologist, and her daughter Dr. Diksha Chaturvedi. She is oncologist from SRMS Bareilly. Hello beta. Good evening ma'am. Good evening beta. Good evening to all seniors. Am I audible? You are audible. You are audible. Ma'am, are you there? Dr. Deepti? Deepti ma'am? I think she left or what? Dr. Neha, is she there? I cannot see her. But you can proceed with your actually dates back to थोड़ा सा मैं historic जाऊंगी. Actually mom dad अगर नहीं एजुकेट होते तो मैं नहीं होती एजुकेट, और अगर उसमें भी मैं थोड़ा सा ग्रैंड पेरेंट्स को ले लूँ तो अगर नानी जी एजुकेटेड नहीं होती और मेरे नाना जी उन्हें एजुकेट नहीं किए होते तो पार्टली उन्होंने भी एजुकेट किया है क्योंकि जो हमारी नानी जी हैं शी वाज सॉरी फॉर माय वॉइस, शी वाज एजुकेटेड टिल 10th स्टैंडर्ड उस जमाने में, और उनके पेरेंट्स काफी मतलब उस जमाने के लिए बहुत बड़ी बात हो गई होगी कि उन्होंने एजुकेट किया एक फीमेल को, फिर उन्हें कंप्लीट कराया, उन्होंने पूरा ग्रेजुएशन किया अपना, और बट ही ऑल्सो मेड श्योर कि उन्होंने अपने सारे बच्चों को एजुकेट किया, मेकिंग श्योर कि सारे बच्चे मतलब बी इट डॉटर बी इट सन सबको एजुकेट किया. फिर एंड माय डैड चोज मॉम एंड they both got married, and my father also he didn't hesitate कि नहीं लड़की तो हम नहीं पढ़ाएंगे. We got admitted जो हमारे सिटी का जो बेस्ट स्कूल था of that time, उस समय फीमेल वाला ही था वो स्कूल, बाद में वो कोएड हो गया, तो उसमें एडमिट कराया. फिर ड्यू टू टाइम एंड बहुत डिस्टेंस थी वो स्कूल, तो वी गॉट इट चेंज टू अनदर वन, एंड फिर उसके बाद आई गॉट इट इन डिफरेंट स्कूल. बट वहाँ पे ये था कि झूले नहीं थे, तो बच्चों को तो झूले चाहिए होते हैं, तो स्कूल में झूले नहीं थे, तो दैट वाज द ओनली डिसएडवांटेज. आई डिडंट लाइक दैट स्कूल फॉर दैट रीजन. उसके बाद एंड अगर मैं ये तो मैटरनल साइड का था, और पैटर्नल साइड में तो फादर मतलब जो मेल है तो एजुकेट रहेंगे, लेकिन उन्होंने भी अपनी डॉटर को एजुकेट किया था. हाउएवर माय फादर वाज देयर अमंग्स द एल्डेस्ट, मतलब डॉटर्स की कंपेयर में ही वाज एल्डर टू हिज सिस्टर्स, सो उन्होंने भी एजुकेट किया. मतलब दोनों साइड में एजुकेशन वाला थिंग वाज देयर ऑलवेज कि एजुकेट करके रखना है, चाहे मतलब अपने पैर पे रहेंगी सब. और जब मैं आई तो एजुकेट किया, स्कूल चेंज हुआ. इवन एट एज ऑफ 18 they dared to send me abroad. I wanted to go abroad. I got a chance to go abroad, and they didn't hesitate. They inquired कि हाँ भी safe है नहीं है. They did all the inquiry वाला part, and they trusted on me. They sent me abroad for 6 long years, and फिर मैं इंडिया आई. Of course हमें FMG देना था, मैंने MBBS बाहर से किया है रशिया से, तो इंडिया आके FMG देना रहता है, and that was a tough exam. And I didn't clear it in one go. 8% of the students they clear it, and that was a real hard time for me, for my parents, because they saw me एक time था कि रशिया में I got scholarship, and from that to drastic fail होके आ जाना, so and to clear, that was a big trauma for me, and I was really upset, and so were my parents at one point. But I really मतलब my parents at one point they said कि चलो at least तुम marriage कर लो and all, but they didn't push me. But I was like I just agreed to that कि चलो marriage कर लेते हैं. But somewhere क्योंकि मैंने mom के profession में, क्योंकि मैं mom के साथ ज़्यादा रहती थी, seeing her patients from my childhood, वो मेरी hobby थी, मैं हमेशा उनकी OPD में चली जाती थी. So I saw the females somewhere. I felt uneducated females का क्या इंडिया में treatment रहता है. They leave the
पेशेंट एंड दे गो, बच्चा हुआ, फीमेल अगर पैदा हो गई तो दे लीव, भैया खर्चा देगा मायके वाले, वो ससुराल वाले नहीं देखेंगे, एंड दे यूज्ड टू लीव द पेशेंट, एंड आई सॉ दैट एज अ चाइल्ड कि व्हाट इज द रियलिटी ऑफ लाइफ. थैंक्स मेरे पेरेंट्स ने कभी उस चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं किया कि तुम देखो दुनिया ऐसी नहीं ऐसी है, सुंदर सी नहीं. इट वाज नॉट ऑल गुडीज. I saw the reality of the life. I was very much convinced कि नहीं मैं पढ़ लूंगी. I will not rather get married. I'll get married when it has to, but I'll prefer to study. And for that, they supported me always. Even in my tough time when I didn't clear, and they were also at one point disheartened कि हमने बाहर क्यों भेजा. So that was a thing. But finally वो actually पता चल गया कि वो racket reveal हो गया. So वो चीज कि चीटिंग वीटिंग होती है, तो देन उसके बाद वाले अटेम्प्ट में मेरा क्लियर होगा. एंड आई वाज लाइक थैंक गुडनेस दैट हैपेंड, क्योंकि आई बिलीव्ड कि मैंने जो आंसर किया एंड दैट वाज करेक्ट आंसर, एंड दे वर नॉट रिवीलिंग द आंसर्स आल्सो. तो दैट वाज अ टफ टाइम. एंड फिर क्योंकि मैंने रशिया की लाइफस्टाइल देखी थी, वहाँ सारी फीमेल्स थी, मतलब ट्रैम चलाती हैं औरतें, टीचर्स थी औरतें, बस कंडक्टर, नेम इट एनीथिंग. जहाँ इंडिया में आदमी लोग हमें दिखते रहते, वहाँ सारी फीमेल्स थी, क्योंकि वहाँ के मेन को भेज दिया जाता है आर्मी ट्रेनिंग के लिए एट द एज ऑफ 4. तो इट्स ऑल वुमेन ओवर देयर इन एवरी फील्ड. तो मुझे वो लगा कि कुछ एटलीस्ट करिए. एंड व्हेन आई केम बैक इंडिया एंड आई सॉ वुमेन इन डिफरेंट स्पेस से जो कर रही हूँ, छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम, दे वर अर्निंग फॉर देमसेल्व्स, कि अपने लिए और या अपने बच्चों के लिए अपने परिवार को चला सकें. इट्स ऑलवेज अ हेल्पिंग हैंड. और जैसे हम लोग को बताया जाता है कि कभी शर्माना नहीं चाहिए हेल्प लेने से. सो इफ यू आर हेल्पिंग मेन इन द रनिंग ऑफ द फैमिली, इट्स ऑलवेज गुड. और पेरेंट्स हैं, दे हैड रियली हेल्प. मतलब मैं उनसे जितना फ्रैंकली बात करती हूँ शायद ही मैं किसी से करती हूँ. मैं अपने भाई से, मैं अपने मॉम डैड दोनों से इतना डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन, all sorts of jokes, veg, non-veg jokes, everything I can crack with them. But that is not possible with outside world. But I feel connected with them. They are connected to me, and I really enjoy their company all the time. Yeah, so I'll talk something about my daughter. Okay. From the childhood, she was very responsible. If her teacher told that I have to show your mom, I have got some problem, I have to show. And she will not come early. She'll come walking with the teacher, in spite of having a cycle. And the teachers used to be, she's a very responsible girl. And that I saw even when my husband had bypass, and she was in the time of clearing her FMG. She took care of the hospital all alone, just on phone, just to keep on ringing and connecting and taking care with such a courage that I really have all the, I really thank God for giving me such a sweet baby, such a sweet, responsible May girl. I interrupt here? I would like to add something more. She did all the naughtiness. That is, she was responsible. She told me, I mean, being a gynecologist is so important. You know, your mothers are so frank to you. And I love that frankness, because she taught me about this, everything. I'll name it sex education. उस जमाने में सेक्स एजुकेशन के ऊपर इतना तवज्जो नहीं दिया जाता था जितना कि in our times with rape cases increase हो रहे हैं. So bad. And Dr. Pratibha, you are there, no? Yeah, I'll tell you. It had happened. IVF के लिए डॉक्टर इलाहाबादी आए थे from Bombay, and they said all the young girls go out from this seminar. She used to be with me, and she felt so bad कि why I'm not being told. Why I'm not being told about what is going on. Okay, how the baby is born, my mother has told me long back, and why they're hesitating. Biologically, or I had a good magazine in which it was shown all ova and sperms. And I showed that to my classmates in the school, and they were like, "Oh, ये क्या लिखा है?" I was like, "ये reality है. Good morning." But she was very responsible. Benefit of getting a good support system. Yeah, support system. Yeah, but one thing I will say,
I told when I was fed up of my career and I was really struggling, and she was in 12th, I told her, get married. She said she used to start crying. Even when she didn't clear her FMG, I told her, get married. Yeah, छोड़ बहुत लोग होते हैं non-medicals, कर ले शादी. What's the use of living professional life? Lead a queen's life, some housewife look, queen's life. She told me, no, mom, I have seen your patients suffering. I don't want, and she used to cry like anything. I won't get married. I don't want to get married. मतलब मैं clear नहीं करूँ तो आप मेरी शादी कर देंगी. So it was a passion. I saw her passion. Then I supported her. I said, okay, you study and we are there to support. तू पढ़, हम आगे तेरे को support करेंगे, बढ़ो आगे. It's okay if the girl wants. It's getting longer. मुझे लग रहा है सभी enjoy कर रहे हैं. I am so thankful to the audience for patient listening. And my thank you. So proceeding, हाँ मैं डॉक्टर प्रतिभा आप ही पे आ रही हूँ. तो डॉक्टर प्रतिभा and आपकी daughter Miss Curie Gupta, she is electronic engineer from Hyderabad, Telangana state. Ma'am, please, yeah. Yes, ma'am. मैं तो पहले ये बताना चाहूँगी कि I have 3 daughters. I'm gynecologist here and I have 3 daughters. So we included that in our movie, ma'am. All your 3 daughters are there. Okay. My eldest daughter is a gynecologist. She is working at CMC Vellore. And second one is US. She has done MBA from USA. So, but I believe today Curie has joined us. Yes. So to share in the USA, time difference. Just a sec, Dr. Anamika. Can we cut short the meeting? Yeah, my daughter has to go for everybody, Dr. Poonam, everybody has been saying that because we are already running so late and we have I would like to time. thank you and lead the meeting. It was a nice meeting and very good meeting. We'll try to wind up as early as possible. And I'm really thankful for the patient listening. This is what I said. But ma'am, अगर बहुत urgent कुछ है तो maybe Dr. Pratibha के बाद आपका ले सकते हैं. But yeah, she has a meeting. She was waiting. She should continue with her meeting, ma'am. If it's urgent. No. Thank you, ma'am. Thank you for being with us. Thank you, Dr. Poonam. Yeah, Dr. Pratibha, please. मेरे ख्याल से थोड़ा सा हम जल्दी करेंगे and I'm so sorry for that. नहीं, okay, no problem. मुझे भी कल 26 जनवरी है. मैं तो हॉस्पिटल में मेरा तो करीब 35 time limit तो already was given 3 minutes. मैं तो बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ. मैं तो सारे पेशेंट को कहती हूँ बीइंग गायनेकोलॉजिस्ट, भाई कोई प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है? तो लड़कियां है, अरे ये क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम तो बताओ. तो मैं जितना होती हूँ, मैं तो वो कन्या भ्रूण की पुकार एक अपने चेंबर के बाहर भी मैंने कविता, चूंकि मैं कवित्री मैं लिखती हूँ, दिस इज माय हैबिट, बहुत दिनों से लिख रही हूँ, कुछ लिखती रहती हूँ. मेरी एक कविता संग्रह भी रिलीज हुई है, तो बाहर ही लगा दिया है. तो मैं बहुत नहीं सुनती हूँ, क्योंकि सुनना मतलब जो है, मैं कहती हूँ देखो ये तो एक बात ही मत करो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है बताओ. लड़कियां होना दिस इज नो प्रॉब्लम. मेरी भी हाँ मैडम आपको क्या समझ में आएगा, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आप डॉक्टर हैं. बोले नो, तुम लोग को बहाना चाहिए, ये कोई पढ़ने लिखने से नहीं, इतना तो तुम्हें बच्चा पैदा करना है, तुम्हें ही सब चीज करना है, तो इतना तो समझो. लड़का लड़की में कोई डिफरेंस नहीं है. हाँ थोड़ा सा यहाँ चूंकि हम लोग थोड़े विकासशील और डेवलपिंग कंट्री से बिलोंग करते हैं, थोड़ा सा एक सिक्योरिटी इशू है. इसका मतलब थोड़े है कि इतना तुम डिफरेंस करोगी, लड़की का है. मैंने बहाना मत खोजो, ट्राई टू अंडरस्टैंड. बस मैं थोड़े उसमें थोड़े पेशेंट देखती हूँ, थोड़े समझाने की कोशिश करती हूँ. Behavioral, lot of things are changing for changing also. lot of positive. I'm realizing that. But the behavior change थोड़ा problem है. जी मैम. They are so nice, highly educated. मैं तो एग्जाम्पल हूँ गोरखपुर में. I don't think कि इतने मतलब हाईली एजुकेटेड तो ही है. 3 बच्चे, तीनों 3 फील्ड में है. मैंने इतनी लिबर्टी दी, बोली नहीं डॉक्टर बनना है, हम लोग की लाइफ देख के, दे वर सो, हस्बैंड इज सर्जन. हमने कहा ठीक है. One is in US these days. She is doing very good. My son-in-law is also American, Gora. Curie, you want to add or build something on that? You are there. So we'll proceed to next. She's not feeling well. Dr. Duo. I think Dr. Anjana, are you there? Yes, ma'am. She's waiting. She also has a meeting. I'm so sorry because thoda late. Akanksha? Yeah, I'm there. I'm so sorry I'll not be able to join on video because I'm having a little bit network issues. I hope that's okay. Yeah, it's fine. Yeah.
Okay. You have to speak up, Akanksha. You speak up. We are short of time, actually. Okay. Yeah. Bye everyone. Good night. So hello everyone. Thanks for having us first of all here. I'm Akanksha Saxena, daughter of Dr. Anya Saxena. So I'll just quickly give a brief about me. I have pursued my BTech from IIIT Allahabad, and thereafter I went ahead and pursued my MBA from XLRA. Now I'm working as an HR business partner in Amazon, and I'm at the leadership role and leading certain people under me. So first of all, this platform actually gives us the empowerment and courage to talk about the experiences, and that's a great beginning for all the girl child that are present here. I've always gotten the support from my parents, and I'll be always grateful for them, because as we have been speaking, everybody has gotten the similar opportunities. But I think the difference I felt at my home was I did not just get the opportunities, I got the courage and the strength to actually go ahead and pursue those opportunities, which actually propelled me in the right direction. एक मेरा को बहुत छोटा सा इंसिडेंट याद है, मेरा जब MBA का सिलेक्शन हुआ था, so my mother just at that point of time got diagnosed with a condition which in which she was advised bed rest for around 6 to 7 months. So at that point of time I was broken, because I had to go ahead and pursue my like higher education, but I did not want to leave my mother behind. So she was so supportive. She did not let me just drop that opportunity. She gave me the strength to go ahead independently and to complete my MBA degree, and always was there for me. She was in a lot of pain, but she did not show it on her face, and that is the kind of woman I want to be, and I will encourage every other girl child to be. So that's the small incident, and this platform actually gives us that opportunity to go ahead and face the world on an independent basis. So thank you so much, and thank you to my parents, especially my mom. Thank you, Vita. Thank you, Dr. Anjana. Thank you. Feels like Mission Pink Health family जो है ना extend हो गई है आज. We are Yes, ma'am. missing our daughters also. So extension हो गया उसका. So it's so, and I hope and I believe we will be able to continue with this bond, doing something very fruitful in future with our daughters and girls also. Thank you so much, ma'am. Thank you. So Very next, true. yeah, ma'am. Next we have from Lucknow, Dr. Manisha Agarwal. She's a gynecologist and head of department, Hind Medical College, and her daughter, she's Miss Kirti Anand. She is director of First National Bank in Omaha, USA. Are you there, ma'am? Yeah, I am there. Okay, ma'am. Okay. Good evening and happy Girls Child Day to all of you. Yeah, same to you, ma'am. And coming to the this responsibility to this raising up the girl child, that irrespective of the girl or boy, raising a child is always a challenging, and it is really a difficult task, and especially in this era. And being a gynecology doctor also, it is a very difficult. But luckily in our house, both are having equal status and the equal duties. Either she is my boy or my girl. As a mother, from the very beginning, I tried not to over-pamper, overprotective, which result to enhance her self-confidence, belief in herself, and decision-making skill to achieve dreams with accepting challenges in the every front of the life. Good friends, communication is the key, and we always try to imbibe these in her this day-to-day activities, and along with the nutrition and yoga and exercise also. एक मैं कुछ कहना चाहूंगी थोड़ा सा,
वो गिरती थी, मैं उठाती थी, पीछे चलकर चलना सिखाती थी। वो गिरती थी, मैं उठाती थी, पीछे पीछे चलकर चलना सिखाती थी। कब वो बन गई मेरी उड़ान, आज यूनिवर्स में मुझे घुमाती है वो अपनी जान। सो दिस इज डेडिकेटेड टू माई डॉटर, क्योंकि मैं जब भी वो कहीं भी जाती है, आई वॉन्ट टू शेयर कि वो मुझे अपना वीडियो कॉल करके पूरा घुमाती है जहां भी वो होती है, और आई एंजॉय दैट थिंग, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कभी इतना ज्यादा घूम पाऊंगी। सो नाउ माई लिटिल एंजल become the princess of our heart and soul, and from you she is a mixture of traditional and modern values, and so she is in front of this world, my daughter and my pride, Kriti Anand. Thank you so much. First, I want to thank everyone who's here for inviting us, because we have been hearing from so many mothers and daughters here. That has been very inspiring. मैं जहाँ हूँ, to be very honest, मैं अपनी मम्मी की वजह से हूँ. And a lot of people out here know कि how difficult it is for a woman to achieve whatever they have in this life. So, sticking to the topic today, मैं कुछ mental health के बारे में बोलना चाहूँगी, क्योंकि बहुत लोग पूरी अपनी रास्ते में ये भूल जाते हैं कि एक मेंटल हेल्थ ऑफ अ गर्ल, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर मी. एंड मेरी मम्मी ने तब एक डिसीजन लिया कि शी टुक मी आउट ऑफ स्कूल. शी सेड आई एम गोइंग टू होम ट्रेन माय डॉटर, एंड दैट वाज अ वेरी बिग डिसीजन फॉर एनीवन. किसी ने ये नहीं सोचा है इंडिया में कि किसी को स्कूल से बाहर निकाल के आप वो भी एक 12th स्टैंडर्ड में यू विल होम ट्रेन योर डॉटर. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अपने 12th स्टैंडर्ड की जब मेरा मैथ्स का बोर्ड का एग्जाम था, हम उससे एक दिन पहले रात में हम लोग 3 इडियट्स देखने गए थे, मेरी मम्मी. सो दैट इज very different story that my mom created for me, and I scored 98% in my 12th. तो ऐसा भी नहीं था कि मैं 60% या 50% स्कोर करके बैठी हूँ. तो I think that is an inspiration in how my mom actually raised me, and where I am, it's always because of her. So another thing I want to say here is, like my mom, there's another person in the meeting here, Ruxana auntie, who has in a lot of ways cared for me in the past 10 years. And Lucknow mein hoke bhi, she has always been very supportive, not only to me, but also to the family. So I want to thank her ki unhone jitna IMA ke liye kiya hai, as well as for all the girl childs out there. I really, the work that she has done is commendable. So even right now when I'm sitting in the US, there's not one person who's standing behind me. There's an army of people, army of women who stood behind me to bring me to where I am. So thank you everyone, and thank you for so many things that you have done. Thank you, Beta. Thank you, Kriti. And I'm sure your journey from a very cute, small little princess to the director of First National Bank, it's very interesting, I believe. And Ruxana ma'am ka to jo enthusiasm hai na, like I always say, it's contagious. Contagious hai ma'am wo. It's infectious hai. So लखनऊ का आगे बढ़ते हैं, और अब मेरी ही बेटी है, डॉक्टर अनामिका, क्या 1 मिनट में मैं भी बोलना चाहूंगी डॉक्टर रुखसाना के साथ, मैम के लिए, क्योंकि मैम को तो इतना ज्यादा वो था, जब कोविड नहीं था, हम 3:30 बजे कॉलेज से आते थे, और फैमिली प्लानिंग और इन सब के लिए अवेयरनेस करने के लिए मैडम कहती सीधे वहां से वहां आ जाओ, और कहाँ कितना अंदर मैडम जो है वो चल के चली आती थी. तो मतलब ये है take away is कि you are never old, age is just a number in mind, and keep on going, doing something, keep you. मैम तो सबके लिए इतना करती हैं, और इतना है कि मतलब रियली मुझे लगता है IMA और WDW तो मैडम से ही चलता है, और अब उसके बाद आप आ गई हो लखनऊ में, तो आप अरे नहीं मैम, ऐसा नहीं है. Thank you so much ma'am. Now I invite my daughter Anshika. Anshika, are you there? Yes, के एग्जाम्स भी है, but I said नहीं, you have to be there.
And she has been waiting for quite some Yeah, time. I know, Like, I know, I know. Bola No, beta. I've been enjoying, I've been inspired so much hearing a lot of stories, and I'm so honored to be a part of this discussion today. And I'm currently a final year MBBS student at Manipal College of Medical Sciences, Pokhara. And I think we all are extremely fortunate. हम लोग बहुत lucky हैं, और जो भी हमने stories सुनी अभी तक, जितना भी हम लोग को जो भी हमें pursue करना है, जो भी education चाहिए हमें life में, we've always gotten that support, and हमको हमेशा at par with boys रखा गया है life में, तो उस चीज में we've always been very lucky. And again, like a lot of other people over here, my biggest inspiration has been my mother. And just like she just mentioned that age is just a number. So मैं अभी भी मम्मा को देखती हूँ, she's so enthusiastic to always learn new things, to always tread on so many new ventures, to try so many new things. और मैं मम्मा से बोलने लगती हूँ, मुझे अरे ENT difficult लग रहा था, ये difficult लग रहा था, और मम्मा is like, मैं मम्मा को देख के सोचती हूँ कि मेरे लिए जो चीज अभी difficult लग रही है, at that age she is accomplishing so much, she has brought about so much change. And which is a very valid point and very relevant today, क्योंकि वो एक support system बहुत ही जरूरी होता है एक अपनी education और पूरा career pursue करने में आगे life में. And which is again very important. Education is the basis जिससे आप independent, strong, free thinkers बनते हो आगे life में. And बहुत ही wide range of possibilities हैं. Education is not limited, सिर्फ books और academics नहीं होता है education में. There is mental health, physical health है. There is the importance of standing on your own feet, financial stability. ये सब education, knowing about your bodies, this is all under education. तो जब तक वो grassroots level of education हमको नहीं मिलता है, तो मतलब we can't really go forward and shine bright in lives ahead. और बहुत ही sad बात है, लेकिन it's true, but many people, many girls around India are not getting that level of education. उनको वो opportunities ही नहीं मिलती हैं जो हम लोग, we have been very fortunate enough to get that. And मैं और मेरी बहन बहुत ही lucky हैं, हम लोग को हमेशा encourage किया जाता है, हमेशा सपोर्ट किया जाता है, और इतना केपेबल बनाया है हमारे पेरेंट्स ने कि हम लोग अपने भाई के लिए जो भी, इज वेरी स्मॉल राइट नाउ, बट उसके लिए मम्मा हमेशा बोलती है यू हैव टू सेट एन एग्जांपल फॉर हिम. सो आई थिंक दैट्स आई एम वेरी फॉर्चुनेट. So but I must share, like gender वाला कुछ नहीं, and he is not at all pampered in our house because everybody thinks कि हाँ एक है बेटा तो बहुत pamper किया होगा उसको. It's not like that. And thanks to my daughters in supporting me doing that. Secondly, like you said, Anshika, it's very right. To have a dialogue is very important. When you say of mental health, like you have to share each and everything with your parents, mothers, जिससे भी आप rely करते हो, तो having a dialogue is very important. And yeah, education is important, but health is equally important. I've been listening to many stories from your hostel. The girls, they used to say, like, how come you have brought up this girl, auntie? Because whatever we are not eating, we are putting in her plate. जो भी जितनी गाजर, मूली, जो भी सब्जियां हैं, वो सब खा लेती है. तो किस तरह से आपने उसे सिखाया है? या एंड हेल्थ की अगर हम बात करते हैं, तो लेट मी शेयर, दिस इज अ वेरी वैलिड एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट, कि जब कोविड में जंग थी ये कोविड की, तो उस समय लगभग 60-70 लाख हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स वर फीमेल्स, चाहे वो आशा वर्कर हो या डॉक्टर्स हो, नर्सेज हो, तो इट्स क्वाइट अ गुड नंबर. तो इट्स द डेवलपमेंट इज नॉट जस्ट educating, but it should be like overall development, contributing to the society. This is what we mother-daughter duo feel. Thank you so much. Thank you. और डॉक्टर अनामिका, ये तो मैं भी कहना चाहूंगी कि we are also very proud of you. सिर्फ अंशिका ही नहीं, हम भी we are also very proud of you. So nice of you, Dr. Divya. ये kind words. Thank you so much. आगे बढ़ते हैं. Not only pride, I like you also very much. Thank you.
सो अब मेरठ से डॉक्टर रेनू भगत, पहले मैं आपसे सॉरी बोलूंगी मैम. डॉक्टर रेनू मैम, शी इज secretary UP WDW and she has joined us from Meerut. Or her daughter Miss Soumya Bhagat, she is hardware engineer from Apple, Florida, USA. Are you there, ma'am? Yeah. Soumya Hello. Bhagat? Yeah. Hello, Anamika. Hello, Divya. Ruxana ma'am, namaste. Hello. Good evening. Good evening, Dr. Renu. Good evening. मतलब बहुत ही वंडरफुल प्रोग्राम चल रहा है, खूब मन लग रहा है. कल के फ्लैग होस्टिंग की तैयारी करनी है, लेकिन लग रहा है कि नहीं, ये प्रोग्राम चलता रहे. पर अभी सौम्या का मैसेज आया कि उसकी मीटिंग शुरू होने वाली है, तो मैंने अनामिका को मैसेज किया कि जरा सा सौम्या को पहले कॉल कर दे. तो मैं चाहूंगी सौम्या अगर है तो वो अपने आप ही अपना इंट्रो देगी. Hi everyone. I'm completely honored to be a part of this. Like, जब मम्मा ने मेरे को पहले बताया कि you have to be a part of this, I was very reluctant कि मेरी meetings हैं, मेरे working hours होंगे. And then when I actually joined this, मेरा मन ही नहीं कर रहा है. Like, मेरा office hours चल रहा है, and I just didn't feel like leaving this at all. And I'm really inspired by all the stories you've heard till now. And I want to say, like, from like I want to accept this, that I've been a very pampered child in my family. Like, I'm the youngest child, and I have an elder brother, and I have my mom, dad, and they've been like really supportive. And I come from like a very, I don't know, I've never felt that, like, everybody's talking about like we're privileged, but I've never even felt that I had to think about it, like that I'll be supported, because it came so naturally from my family, be it my brother, be it my father, be it my mom, and I feel really lucky about it. So, and thanks to them, like, I achieved, like, I just completed my master's last year from United States, from Purdue University. And I'm now working as a senior hardware engineer at Apple in Florida. And it was a really difficult decision to come to United States. I came in like 2019 to take my higher education, and saying that I've been a very pampered child, I really felt so homesick after coming here. And I used to cry sometimes, like, you know, calling back at home, like, Mummy, mujhse nahi ho raha hai, mujhse khud se khana nahi ban raha hai, mujhse khud se cheezein nahi ho rahi hai. And she always used to say, like, Soumya, agar tum khud himmat haar jaoge, to tum bakiyon ko himmat kaise doge? So I've always heard that from her, and I really feel inspired that at this age, all of you for that matter, आप लोग इतना अपने comfort zone से step out करके इतने bold initiatives लेते हैं, इतना women education and security के लिए इतना effort put in करते हैं, and I'm really inspired by you all. And I remember, like, everybody was sharing the experiences of hardships, and I wouldn't say it as a hardship, but I just like want to talk about this on this occasion of World Child Day, that my corporate sector, I've been working for like almost 5 years now, and I've seen this, like, sometime or the other, every woman, like every girl has felt this in their workplaces. Like, एक meeting room में आप कोई meeting चल रही है या आपका कोई discussion चल रहा है, you've always felt that subtle आप एक जेंडर बायस आप फील करते हो. लाइक आप एक आपकी मीटिंग में आपको कुछ आइडिया बोला या आपने कुछ भी बोला, उसके बाद में एक ऑकवर्ड सा साइलेंस आ जाता है. एंड बिलीव मी और नॉट, वो कॉर्पोरेट सेक्टर इज लाइक हेवीली मेल डोमिनेटेड. लाइक राइट नाउ हम 150 का अगर ऑफिस है, मतलब पीपल का है ऑक्यूपेंसी, उसके अंदर हम लाइक वी जस्ट लाइक 4 or 5 गर्ल्स. And it's like, it feels sometimes really weird because वो equality feel नहीं होती है, चाहे आप कितना भी कहें, लेकिन वो equality अभी भी feel नहीं होती है इतनी higher education लेने के बाद भी. And we are always hesitant to speak because हम ऐसे condition हो गए हैं society में कि, you know, if we speak out or if we talk about something, if we deliver our ideas, सब इतना अच्छे से receive नहीं करेंगे, everybody will judge us or something like that. And अभी कुछ सालों तक ये था, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लगता है कि इवन इफ व्हेन इट्स नॉट देयर, अभी ऐसा लगता है कि कोई अभी हमारे आसपास के लोग हमें जज नहीं भी कर रहे हैं, तो भी वी आर काइंड ऑफ, यू नो, बायस्ड इन आवर ओन हेड्स कि नहीं, हमको जज किया जाएगा अगर हमने कुछ भी बोला, या हमारे आइडियाज वुड नॉट बी वेलकम्ड. सो आई रियली फील कि हमें भी, मतलब नॉट जस्ट दी अदर पीपल और या फिर मेल्स को हम कहते हैं कि नहीं वो प्रोग्रेसिव नहीं है, मे बी दे आर गेटिंग प्रोग्रेसिव, बट वी ऑल्सो हैव टू बी फियरलेस एट आवर एंड्स कि हमें बोलना पड़ेगा. लाइक वी डोंट हैव टू बी अफ्रेड टू स्पीक आउट व्हेनेवर वी वांट टू. हमारे आइडियाज भी उतने इंपॉर्टेंट है
सोसाइटी की ग्रोथ के लिए जितने कि उनके हैं या फिर जितने हम आप सबके हैं. So I think that is a message I want to deliver, like कि I have also learned it a hard way कि अगर आप पूछोगे नहीं तो आंसर हमेशा no होगा. So you have to speak out. So yeah, that's what I had to say. Thank you so much, and I'm so proud to be a part of this. Soumya beta, that is a great takeaway for every girl child. और ये the program कि बोलना पड़ेगा, you have to speak out. You have to Especially like you had given example of corporate sector. It's very true. बिल्कुल But बिल्कुल बोलना पड़ेगा. Keep और your ये views, what you want, in what manner. बिल्कुल और Right. ये बात तो Dr. शायद Divya, डॉक्टर अनामिका मैं कई बार बोलती हूँ कि माँ भी बच्चे को दूध तब पिलाती है जब बच्चा रोता तो है. सब रोता है. तो आपको अपने लिए आवाज उठानी पड़ेगी. दूध चाहिए तो बच्चे को रोना पड़ेगा. वही है सिस्टम हर जगह. आवाज उठानी होगी. डॉक्टर अनामिका, मैं एक बात कहना चाहती हूँ. ये जैसे ही वहां गई थी उसके 1-2 महीने बाद ही जब इसे वहां लगा कि अपने आप सब काम करना पड़ेगा, और ये एक दिन रोने लगी, तो क्योंकि हमारे से दिन और रात का फर्क है, तो मैंने इसको एक बात कही थी कि या तो तुम जाती नहीं, अब जाकर तुम मैदान छोड़कर वापस नहीं आओगी, अब तुम्हें अपनी MS कंप्लीट करनी पड़ेगी. एंड शी डिड इट विद फ्लाइंग कलर्स. गॉड हैव द जॉब. और दूसरी बात, अभी जब इसको एप्पल में इंटर्नशिप मिली तो इसने बोला मुझे, जो ये अभी प्रॉब्लम बता रही है कि मम्मा वहां जो बॉयज थे उन लोगों को तो उन लोगों ने जॉब ऑफर किया है, तो मेरे को क्यों नहीं किया, मेरी परफॉर्मेंस तो उनसे अच्छी थी. एंड दैट डे वाज सैटरडे. मैंने कहा सो मैं वेट फॉर संडे ओनली, एंड मंडे को पूछने में क्या जाता है, जॉब तो वैसे भी नहीं मिल रहा है, तो वैसे नहीं मिल रहा है, पूछने में क्या जाता है. एंड देन व्हेन शी आस्क्ड, तो उसकी मेंटर ने ये बोला कि हम ये सोच रहे थे कि तुम्हें जॉब ऑफर करे कैसे, हम उन्हें पूछने में शर्म आ रही थी इनसे. तो मीन्स वो जो ये कह रही है कि एक हेजिटेशन है, वो है हमारे ब्लड में. तो उसके बाद जैसे इसने पूछा और इतनी अच्छी पोस्ट मिली. नहीं, that is a बहुत important message है ये सभी के लिए कि speak out and shout out loud for the correct thing, whatever is appropriate. Thank you, ma'am, and thank you, Soumya beta. Then I think Muradabad से Dr. Poonam थी and she left. बहुत late हो रहा था. I'm so sorry, Dr. Poonam. And I'm so sorry. Apologize to everyone because I had to put in a certain manner, whether it was alphabetically or district wise or किसी को second last होना ही था. I apologize for that. Still, but I think everyone is enjoying, and जो message मिल रहा है, जैसे हमने शुरुआत की थी कि कुछ ना कुछ संदेश है सभी के पास, सभी की बातों में, सभी के experiences में. So I hope everyone is just imbibing that. फिर वेस्ट गाजियाबाद से हमारे साथ हैं डॉक्टर मंजू बारिक मैम. शी इज गायनेकोलॉजिस्ट एंड उनकी डॉटर मिस शिंजिनी गुजराल, एंड शी इज फाइनेंस कंसल्टेंट विद कॉग्निजेंट स्वीडन. So she is joining from Sweden. Ma'am, please. Shinjini है ma'am? Yeah, she has joined. Okay, thank you. So I will just introduce because we are running late. Good evening, everyone, and सबको National Girl Child की शुभकामनाएं. And for me, the girl child was never a problem because I was brought up in a large family. We were 6 sisters and 1 brother. But at that time, in 60s, my father brought us with so much of care, and he was so progressive in thinking, and he encouraged all of us to get a best of education at that time. And I'm proud to say we all sisters went ahead in our career and became very successful woman. So for the stigma of male child was never touched me. I have got 2 daughters, and both have done the MBA from prestigious business school, and the Shinjini is the elder one, and she is working in Sweden. And I always told my daughters that education is must for you, and that it is the only tool which unfolds your potentials and give you empowerment to rule the world. Because for being a girl, as Soumya has said, you have to work hard to prove yourself. You have to not give 100%, you have to give 150% of yourself to prove yourself. So I will just say that girls are the princess of home.
but they can rule the world like queens if they want. So I will ask my daughter to speak because we have got very little time left. No, मैम बस अब खत्म हो गया वेस्ट गाजियाबाद W आपका लास्ट था I'm sorry for that. मैं 2 लाइन बाद में बोलूंगी. I think I would like to Shinjini बेटा आप पहले yeah. Yeah, thank you everyone, and it has been like a wonderful session listening to everybody. And I mean, first of all, I want to say that it is so good to have a session in the evening in Sweden here, so that you feel like it's a wonderful, empowering message for yourself to feel as a woman. And one thing I would like to say I gathered from this is that we all have been very lucky that we got the support system that we needed from our parents, from our mothers to achieve what we have achieved till now. And I hope that in India, we can, I mean, you all there and so many new people and within the corporate sector and everybody can provide that support system to every girl child in India, because we Indian population, it's almost 48% now of a woman population, and our country can definitely become a superpower if we empower those people, and especially the girl childs there. So it's so good to connect with everybody and hear about how big changes everyone is making in their inspiring people out there. Thank you, beta. Thank you. In the last, because I am the last one, so I will sing. I would like, because I always end my talk with one song. So I'll just sing 2 lines. Okay, ma'am. Okay. This is for the girl child and to give them the wings to fly and soar high in sky. दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, रंग मन में छोटी सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा, दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा. Please give wings to your daughter. They will fly high and make you proud. The girls can do wonders for you. That's all I want to say. Thank you, ma'am. Thank you. देश को संवार रही हैं सब लड़कियां. बिल्कुल. They can do wonders for you. Yes, and for parents also, they are very much attached also, and they give you emotional support. And my daughter is in 11th standard, and I was imbibing everything for her upbringing. Yes. And let me share, like, because we had photographs of, because everybody was so enthusiastic, नहीं हमको भी देना है. तो डॉक्टर शिफाली, डॉक्टर नेहा, उनके बच्चे बहुत छोटे हैं अभी. तो देन आई सेड कि नहीं, अभी जो ग्रेजुएशन करके करियर अपना सेलेक्ट कर लिया है, वी आर सेलेक्टिंग ओनली दोज डॉटर्स टू इंटरैक्ट अभी, बिकॉज हायर एजुकेशन को लेके कुछ हम बात करना चाहते हैं, चैलेंजेस कैसे फेस कर रहे हैं, उनके एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहते हैं हायर एजुकेशन पे फोकस करके. तो मेरे को आई वाज फीलिंग लाइक देन वो जो आप पोस्टर में 2 बच्चियों के फोटो देखे होंगे, तो उसमें एक डॉक्टर नेहा की बेटी है जो प्यारी सी बेटी है, चश्मा लगा है, और एक डॉक्टर शिफाली की बेटी है. तो आई वाज लाइक मुझे कहीं ना कहीं आपका डालना है छोटी बेटी का. So sweet. My daughter is in 11th standard. And it was so nice. I hope everybody enjoyed this session. Although time बहुत ज्यादा लग गया and सबको कहने के लिए था और हमें सुनने का भी बहुत मन था, and it's so encouraging and motivating कि 10 बज रहा है अभी भी we all are there, and I'm so thankful to Ravi sir, Dr. Ravi Vankhetkar sir. You are still there patiently listening to each and every participant, to each and every mother and daughter. Thank you so much sir for being with us. Now I invite Dr. Renu, are you there? Yeah. Now I invite Dr. Aruna Narayan ma'am to share her words of wisdom with us. Thank you, madam. Please. Thank you very much. मैम बहुत ही अच्छा लगा. हाँ मैम, बहुत पेशेंटली आप भी सुन रहे हैं. थैंक यू टू यू आल्सो. बहुत ही अच्छा लगा आपका मिशन एमपीएच के बारे में हमको
हमको कुछ भी पता नहीं था। इनफैक्ट हम IMS से ज्यादा एसोसिएटेड नहीं रहे कभी, तो हमको ज्यादा आइडिया नहीं था, बट इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। और सबसे अच्छी बात है कि जो बेटियों का सुना, बेटियों के एक्सपीरियंसेस सुने, उनके जो छोटी छोटी स्टोरीज सुनी, दैट वाज वेरी इंस्पायरिंग, वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी एनकरेजिंग। बहुत अच्छा लगा सुन करके। बस मुझे ये लग रहा है कि जैसे हम लोग की बेटियों ने जो बात की, वो हम लोग के कितने % बच्चों को ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आई थिंक मुश्किल से 10% या 15% बच्चियां इतने अच्छे मौके पाती हैं कि वो सब कुछ कर सकें। लेकिन जो हमारी सोसाइटी में नीचे के तबके हैं, हम लोग सब फील्ड में काम कर रहे हैं, आप सब लोग फील्ड में जाते हैं, आप लोग काम कर रहे हैं, आपको ही मालूम है कि कितनी लड़कियों को ये अवसर नहीं मिलता और हमको उनको अवसर देना है। लेकिन उसके लिए हमको 3-4 चीजों पे बहुत ध्यान देना पड़ेगा। एक तो हेल्थ की बात जब हम करते हैं, तो हेल्थ में एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए बेसिकली न्यूट्रिशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप लोगों ने खुद ने कहा कि अनीमिया इतना कॉमनली प्रिवेलेंट है, और उसकी वजह ये नहीं है कि लड़कियों को पैसा नहीं है। आपने कहा रिच लोगों के यहाँ बहुत इस तरह के मिल रहे हैं कि अनीमिक लड़कियां, और उसकी वजह यही है कि हम लोग सही टाइप का फूड नहीं देते, उनको सही डाइट नहीं देते। एग्जैक्टली जो बैलेंस डाइट होनी चाहिए, ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स होनी चाहिए, इस तरह की चीजें हम नहीं दे रहे हैं। दूसरे वो लोग जंक फूड खाते हैं बच्चे, और हम बच्चों को इनकरेज करते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि पैसा है, हमें तो पिज्जा खाना है, नहीं मम्मा हमें तो मैगी खा लेंगे, हमें तो आप बर्गर मंगा दो। इस तरह की चीजें हम एनकरेज करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स पी लो, ये नहीं ठीक है। तो बच्चों को सही डाइट, सही नरिशमेंट मिलना बहुत जरूरी है हमको। जैसे कि मुझे बहुत खुशी हुई सुन करके, एक बेटी ने कहा कि वो गाजर मूली सब कुछ खा लेती है। बहुत अच्छा लगा सुन के। मतलब हमको अपने बच्चों में इनकलकेट करने पड़ेगी ये आदत कि बच्चे हरी सब्जियां खाएं, बच्चे सैलड्स खाएं, बच्चे जो है फ्रूट्स खाएं, क्योंकि ये सब चीजों में जो फायदा है वो हम लोग को किसी भी हाल में, जो टिंड कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं बच्चे, या हम लोग जो जूसेस भी लाते हैं, तो वो जो पैक्ड जूसेस है वो दे आर नॉट बेनिफिशियल, इनफैक्ट वो नुकसान करते हैं। इसी तरीके से जो खाना हम लोग खाते हैं, जंक फूड बच्चों को खिला रहे हैं, वो गलत है। सादा घर का बना हुआ खाना, हरी साग सब्जियां, खूब सारे फ्रूट्स, जर्मिनेटेड चीजें देने की आदत बच्चों को डालें। हम लोग सही खाना पीना खिलाएं, ये बहुत जरूरी है बच्चे की हेल्थ के लिए। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो हमको एडोलेसेंट गर्ल्स में है, वो है हाइजीन। उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग ये सोचे कि सिर्फ बहुत पैसा चाहिए इसके लिए, ऐसा नहीं है। पर्सनल हाइजीन के साथ साथ मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, फोकस करना है। वी हैव टू एम्फसाइज कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए कोई जरूरी नहीं कि हर बच्चा सैनिटरी नैपकिन ही यूज करे। इट मे बी ए प्योर क्लीन कॉटन क्लॉथ, लेकिन उसको कैसे यूज करना है, कैसे डिस्पोज ऑफ करना है, ये भी हमको बताना पड़ेगा। तो मिशन पिंक हेल्थ वालों से मैं टीम से ये गुजारिश करूंगी कि आप लोग अपने इस प्रोग्राम में इसको भी जरूर ऐड करें। जी मैम। बहुत सारे हमारे सैनिटरी नैपकिन ऐसे हैं जो बहुत सस्ते भी आ गए हैं, बट कोई जरूरी नहीं कि सैनिटरी नैपकिन को ही प्रमोट किया जाए, बट वी हैव टू प्रमोट मेंस्ट्रुअल हाइजीन, वो बहुत जरूरी है। हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, और तीसरी चीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो भी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी बेटियों को ये एम्पावर करना कि वो अपने लिए खड़ी हो सके, क्योंकि जैसे हम लोगों ने अपनी बेटियों को मौका दिया, वो पढ़ी लिखी, आगे बढ़ी, अपने पैरों पर खड़ी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, और इसके अलावा वो मेंटली भी इतनी स्टेबल है कि वो आगे डिसीजन ले सकती हैं। बट फॉर मेनी मेनी गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, हमको ये चीज उनको समझानी पड़ेगी, उनको एम्पावर करना पड़ेगा। लड़कियां इंटर पढ़ रही होती हैं, उनकी शादी तय कर देते हैं। अभी जब मैं कुछ दिनों पहले सिरसा में थी सीनियर एडवाइजर, तो हम लोगों ने एक प्रोग्राम चलाया था, मेरी सेहत मेरा निर्णय। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। उसमें क्या था कि सारे डिस्ट्रिक्ट, हमारे यूपी में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में 30-30 डिग्री कॉलेजेस, इंटर कॉलेजेस हम लोग लिए गर्ल्स के। उसमें हमको ये सिखाया कि तुम किस तरीके से अपने पेरेंट्स से उनको पूरा आदर और सम्मान देते हुए उनका रिगार्ड करना है, उनको रिस्पेक्ट पूरी देनी है, बट यू हैव टू बी सो एम्पावर्ड
कि आप मना कर सको कि मुझे अभी शादी नहीं करनी, अभी मुझे पढ़ना है या पापा मुझे भी पढ़ना है, मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊंगी, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगी तब शादी करूंगी। तो ये एम्पावर करना भी बहुत जरूरी है। बेटियों को ये भी सिखाना पड़ेगा कि वो शादी के लिए मना कर सके और दृढ़ता से मना कर सके उनको, और उनके हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। एज टीचर्स, एज डॉक्टर्स, एज सोशल वर्कर्स या एज सोसाइटी की कोई भी इम्पोर्टेंट स्टेक होल्डर, हम लोग को ये बात करनी पड़ेगी। तो हम लोग को बेटियों को एम्पावर करना है, बेटियों को सपोर्ट करना है, उनको हेल्थ वाइज न्यूट्रिशनली उनको मजबूत बनाना है, स्ट्रांग बनाना है, और उनकी मेंटल हेल्थ को भी देखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बेटियां हमारी किसी लेवल पे डिप्रेस ना हो, किसी भी लेवल पे उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना है, और वो अच्छे से एम्पावर होकर के आगे बढ़ सके। तो मैं मिशन पिंक हेल्थ को बहुत बहुत बधाई दूंगी, शुभकामनाएं दूंगी, और मैं चाहूंगी कि कुछ चीजें जो बहुत इम्पोर्टेंट है उसको आप अपने प्रोग्राम में जोड़ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि आयरन फॉलिक एसिड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर किसी बच्चे की शादी होती है, शादी के बाद इस बात को समझाया जाए कि हर बच्चे को फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम जरूर खानी है। यू नेवर नो कि वो कब कंसीव हो जाएगी। हम बहुत खुश हैं कि हम लोग के प्रधानमंत्री जी ने हम लोग के यहाँ बच्चों की, लड़कियों की एज ऑफ मैरिज बढ़ा दी है। बहुत ज्यादा मैं इस बात की सपोर्टिव हूँ। इनफैक्ट तो मैं कहती हूँ 24-25 से पहले शादी नहीं होनी चाहिए, तो 21 तो मिनिमम बहुत अच्छा है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि गवर्नमेंट ने इस बात को सोचा। बहुत जरूरी है बेटियों की शादी 17-18 साल की उम्र में करना, फिर उन लोगों को गृहस्थी की आंच में झोंक देना, ये बिल्कुल गलत है, उनके संग नाइंसाफी है। हम लोग अपनी बेटियों को सबल बनाना होगा, सुदृढ़ करना होगा। हम उन्हें अबला नहीं रखेंगे, हम उन्हें सबला बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। you, ma'am. और जो आपने जो सुझाव दिए हमने बिल्कुल नोट किए मैम, और आगे इंक्लूड करेंगे अपने उसमें, और कुछ पे हम कर भी रहे हैं। और जो आपने बहुत अच्छा बोला, अवसर सबको देना है, तो ऐसा कोई अगर इनिशिएटिव वन सिटीजन वन चाइल्ड ऐसे कोई ले ले, या फिर एज एन ऑर्गेनाइजेशन हम क्या कर सकते हैं जो आज चर्चा हुई उसके आगे बढ़ाते हुए जरूर हम उसमें हम लोग आगे बात कर प्रयास करेंगे। जी मैम, जी अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है अपनी। लेट्स सेट आवर अकाउंटेबिलिटीज, हम कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे, हमारा इन्वॉल्वमेंट क्या होगा इन चैलेंजेस को डील करने में। जैसा मैम ने कहा, गवर्नमेंट ने बहुत से स्टेप लिए हैं, बहुत जो एज फॉर मैरिज इंक्रीज करना, इसके अलावा सेव द गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि योजना है, या उड़ान स्कीम है, फ्री सब्सिडाइज्ड एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड है, या रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन कॉलेज यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन के लिए है, नेशनल स्कीम्स हैं, कुछ इंसेंटिव्स हम कैसे दे सकते हैं लड़कियों को सेकेंडरी एजुकेशन के लिए, हायर एजुकेशन के लिए। या एक चीज जो आपने बोली मैम मेंस्ट्रुअल हाइजीन को लेके, तो उसमें एक जगह मैंने आंकड़ा पढ़ा कि जो वो वन स्टॉप सेंटर्स, ये जो जन औषधि केंद्र हैं, तो इन जन औषधि केंद्र में सैनिटरी पैड्स जो हैं 1 रुपए का कुछ पैक नहीं, हम लोगों ने जब एनएचएम मैम थे तो हम लोगों ने इसका प्रोग्राम शुरू किया था। इनफैक्ट महोबा में पहली मशीन लगी थी जो कि बहुत ही सस्ते सैनिटरी नैपकिन 2 रुपए का हम लोग दिलवाते थे। और आप तो समझ लीजिए यूपी में 37 डिस्ट्रिक्ट्स में इस तरह की मशीनें लग गई हैं जो कि इजीली सप्लाई कर रहे हैं। तो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, वो आसानी से बच्चियों को मिल सकती है। दूसरे हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से किशोरी स्वस्थ किशोरी योजना भी चला रहे हैं। उसमें हम लोग जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जाने वाली लड़कियां हैं क्लास 6 to क्लास 12, उनको हर महीने 1-1 पैकेट फ्री मिलता है। वो ये एक तरह से इंसेंटिव भी है पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर लड़की घर बैठेगी तो नहीं मिलेगा, तो पढ़ती जाएगी तो उसको मिलेगा। तो दैट इज आल्सो एन एनकरेजिंग पॉइंट के से बच्चियां पढ़ती है। मतलब 8000 प्लस कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जो स्पेशली गर्ल्स के लिए इंक्लूड किए गए हैं। कुछ सुकन्या समृद्धि योजना है जिसमें कुछ 1.5 लाख की राशि तक का लोन, या कैसे स्किल इंडिया मिशन है गवर्नमेंट का कि उनको एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ कैसे जोड़ना है, या मुद्रा योजना है। तो कई सरकार की तरफ से बहुत सी योजनाएं। जब आप एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं कि एवरीबॉडी इज नॉट बोर्न विद सिल्वर स्पून, तो उस तबके के लिए, या अगर अंडर प्रिविलेज्ड हैं तो वो उन तक कैसे पहुंच सकते, लेकिन उनको पहुंचाना, उनको अवेयर करना, तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है।
और एक अकाउंटेबिलिटी एज एन ऑर्गेनाइजेशन जैसा मैंने बोला, और एज एन इंडिविजुअल हमारी बनती है कि हम मदद कर सकें। तो कभी हम ऐसा भी कोई कार्यक्रम भविष्य में प्लान करेंगे जिसमें हम इन योजनाओं पे चर्चा कर सकें जो गवर्नमेंट की ओर से हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड को कवर करती हैं। अब कार्यक्रम को हमारा अंत की तरफ बढ़ चुका है और बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लग रहा है, सभी ने एंजॉय किया जैसा मेरे को लग रहा है, सभी वैसा ही फील कर रहे हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ डॉक्टर नीता, आर यू देयर नीता मैम? यस डॉक्टर अनामिका, आई एम मैं हियर। डॉक्टर नीता से आग्रह करूंगी कि आप वोट ऑफ थैंक्स दें। हाँ मैम, बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन रहा ये। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम डॉक्टर नीता शर्मा, गायनेकोलॉजिस्ट, सेक्रेटरी मिशन पिंक हेल्थ हापुड़ and Vice Co-Chairperson Zone 2 MPH West UP Chapter. It's my proud privilege and pleasure to thank all of you on the behalf of National MPH IMA UP State. I would like to thank you all for gracing this occasion with your presence. Chief guest, Professor Dr. Ravin Sitaram Vankhetkar, Founder Mission Pink Health and World Medical Association Treasurer. Guest of honor, Dr. Aruna Narayan, Retired General Manager, Adolescent Health, National Health Mission UP. Guest of honor, Dr. Sharad Agrawal, Veteran and past Vice President, IMA Headquarters. And the very dynamic Dr. Poonam Singh, Co-Convener, National MPH. Our expert, Dr. M.K. Bansal, President, IMA UP. The very skilled Dr. Rajiv Goyal, Secretary, IMA UP. And all dignitaries, Dr. Ruxana Madam, Dr. Meena Madam, Dr. Anil Kapoor, Dr. Anand Kash, and the most talented Dr. Divya Chaudhary, Chairperson, MPH IMA UP. And a special thanks to very pleasant and all-rounder Dr. Anamika Pandey, Secretary Mission Pink Health IMA, because of whom this meeting is organized so wonderfully in a grand way. All the Mission Pink Health team, Lucknow, Gorakhpur, Aligarh, Ghaziabad, West Ghaziabad, Meerut, Basti, Gonda, Sitapur, Muradabad, and Hapur. And I am very grateful all the great mothers and beautiful, lovely daughters who spared their busy time and joined from far off places from India and outside India. And there are so many delegates who have joined, doctors, teachers, parents, students, and we are thankful to them also. And a special thanks to Mayank and Vasu and team for providing Zoom and web-based platform Core Connect. And Last but not the least, मैम इसमें वशिष्ठ का नाम ऐड करूंगी मैं, सॉरी। हाँ, अच्छा, Thank you so much, ma'am. and so many others I haven't mentioned. Thanks a lot. And और मैम इस समय last, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे मेंटल हेल्थ वाले प्रोग्राम में भी और आज वाले प्रोग्राम में भी लाइक ऑल थैंक्स टू कोर कनेक्ट, उन्हीं की वजह से हम लोग इसको इतने नंबर्स में yes. कर सकते हैं। And media is very smooth all the time. We didn't have any problem. Last but not the least, I would like to applaud all the speakers for their wonderful talk on the National Girl Child Day and making this event so wonderful. Thank you everybody for joining. And you all are great. You have organized in such a nice way. I'm really, really impressed. Thank you very much. Thank you all. Congratulations. Thank you And so much. Congratulations to everybody. Wonderful program. Wonderful. Thank you. Great, Thank you, Dr. great. Divya. Dr. Your Anamika. poem was Such a very good, wonderful ma'am. program. Wonderful program. Thanks all. Wonderful presentation. I think Nice Really infrastructure. enjoyed. Really enjoyed. It's very